देवी और सज्जनों, आप सभी को सबसे पहले दोबारा से मैं वेलकम करता हूं क्विज की और हमारी आज की इवेंट पे। और चलिए फिर सीधा चलते हैं मैच की तरफ, क्योंकि वक्त बहुत कम है और यहाँ पर हमारा जो गेम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स के साथ हमारा पहला गेम, इसके साथ चलते हुए चलो फिर मैप देख लेते थोड़ा बहुत। और साथ ही साथ मैंने जो वो लोगो डाला ना, वो भी थोड़ा सिक्योर करना है मुझे। तो ये लो, एवरीथिंग इज सेट। तो बैटल हो रही है शुरू और यहाँ पर टीम डीआरएस गेमिंग, उनके साथ ही वो बैटल चल रही होती थी और यहाँ पर टीम डीआरएस गेमिंग ने वो संभाला भी। अब किलर वाइटी साइक्लोन ये ताऊता सबको देखेंगे, लेकिन ये ताऊता उनको देखेंगे यहाँ पर। ये देखने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। अब गेम इंजन साउंड वो भी आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से आएगी और आप मुझे भी अच्छी तरीके से सुन पाओगे। लेकिन बैटल्स बहुत सारे जगहों पे चल रही है, जैसे कि मानो टीम 141 भी वहाँ पर बैटल के अंदर दिखाई देगी आपको। और आज तो ना पहली दिन है, सिर्फ पहला दिन है आज। वही पे टीम टी2 की स्पोर्ट वो राइवल्स के साथ बैटल करते हुए आते हैं और यहाँ पर टीम 141 अभी तक कोई भी पॉइंट सिक्योर नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉक निकाला। अब उनके सामने कौन है? फोरियों को लकी कैट है और ये फाइट कर रहे हैं नोवर अपना के पास। अब पंख आगे दिखाई देंगे, कंपनी के अंदर वो आ नहीं सकते, उनके हाथों पे डीबीएस वही बीपिन है, लेकिन दूर से स्प्रे आएगी और 141 911 के हाथों बीपिन का नॉक यहाँ पर निकाला जाएगा। फिर पंख वो संभाल लेंगे, क्लोज 1v1 कर लेंगे, लेकिन दो ड्रग्स उनको नॉकआउट करने के बाद सीरियस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। फिर सीरियस एक नहीं दो नॉक्स यहाँ पर निकाला जाएगा उनके तरफ से। वही स्काई फोर्स की गॉडलेस के हाथों डीआरएस के किलर वाइटी नॉकड आउट और डीआरएस के एग्जांपल उन्होंने संभाला। स्काई फोर्स की गॉडलेस, फिर स्काई फोर्स के आईसी के फिर पे डीआरएस के एग्जांपल को टेक डाउन करेंगे और यहाँ पर फोरिंग को लकी कैट के फेयरलेस उनके साथ यहाँ पर एक 1v1 आप देख पाओगे। अब सीरियस को टेक डाउन करने के बाद फेयरलेस खुद कंप्रोमाइज्ड हो गए थे और टीम 141 की 911 ने सही वक्त पे यहाँ पर उन्हें रोक पाए। बहुत अच्छी बात है, सही वक्त पे यहाँ पर रोक लिया तो 141 इस बैटल को जीत गए। फिर अगर हम बात करें टीम डीआरएस गेमिंग की, तो उनके साथ स्काई फोर्स के बहुत अच्छे से चल रहा था और यहाँ पर टीम स्काई फोर्स के अगेंस्ट में टीम डीआरएस ने बहुत से किल्स या फिर बहुत से नॉक सिक्योर कर रहे थे, लेकिन अब टीम स्काई फोर्स ने खुद को रिटेलिएट कर लिया और शॉटगन के हाथों से डायरेक्टली गॉडलेस चार्ज करता हुआ एग्जाम्पल के साथ। फिर साइक्लोन उनके तरफ से मदद भी मिल जाती है, लेकिन आईसी वो साइक्लोन को नॉकडाउन करने के बाद इस बार फिनिश ही कर लेते हैं। लेकिन ये देख लीजिए टीम स्काई फोर्स के सिर्फ एक अकेला खिलाड़ी आईसी, और अब आईसी को सोलो यहाँ पर रहना है। सबसे पहले तो उनको यहाँ पर रेस्क्यू करना है और फिर देखना है कि क्या हालत है, क्या बात है। और वही जो लाइव रैंकिंग मैं देख रहा हूँ ना, तो उस लाइव रैंकिंग में क्या सिचुएशन आ रही है, कोई बात नहीं। मैच एलिमिनेशन वो सही है, अभी तक काउंट क्यों नहीं हुआ? चलो कुछ देख लेता हूँ। ओके, फाइट्स और भी जगह चल रहा है और यहाँ पर आईसी ने ये ताऊता के साथ एक जंप शॉट करके 1v1 निकाल लिया। फिर किलर वाइटी वो वही जगह से आईसी के ऊपर शॉट करता हुआ दिखाई देगा जहां पर आईसी खुद गए थे और अब आईसी के सामने तो किलर वाइटी और किलर वाइटी के किलर शॉट्स। आईसी नॉकड आउट, गॉडलेस एक अकेला खिलाड़ी, रेस्क्यू करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। किलर वाइटी उससे पहले ही यहाँ पर पुश करना पसंद करेंगे और जंप शॉट, लेफ्ट शॉट, लेकिन गॉडलेस उन्होंने जंप शॉट तो नहीं कर पाए, लेकिन लेफ्ट शॉट से नॉक निकाला जाता है। फिर एग्जाम्पल को देखते हैं वो और पास में आके एग्जाम्पल को भी नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं। तब तक और एक फाइट खत्म हो जाएगी और वहाँ से हम और एक टीम को खोलेंगे, लेकिन गॉडलेस ने डीआरएस गेमिंग की एग्जाम्पल को फिनिश कर लेंगे और फिर टीम स्काई फोर्स ये बैटल जीत जाएगी। आईसी गॉडलेस दोनों मिलके ये बैटल जीत लिया है, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ। पहले जो ड्रॉ क्लैश बैटल्स हमने देखे वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। चलो फिर दर्शकों, मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए वो स्लॉट लिस्ट लाता हूँ ताकि कोई भी टीम हमारे सामने हो हम उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने ला सकें और ऐसे ही चलो सभी के बारे में मुझे पता है।
तो वॉरफेयर क्लैश सीजन 2 में आप सभी का फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं गॉड्स किंग स्पोर्ट परिवार में क्विरकी और के साथ ग्रैंड फाइनल डे 1, जहां पर आपकी पसंदीदा स्क्वाड्स वो देखने को मिल जाएगी। हेलो हिंदी लॉल हाँ, क्योंकि मैंने अभी नींद से उठ गई, तो मैंने अभी नींद से उठा है, तो ऐसे ही थोड़ा वक्त मुझे लगता है पहली गेम पे, फिर दूसरी गेम से सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन ये पहली गेम से ही सब कुछ सही हो जाएगी, कोई दूसरा तीसरा गेम अब उनको नहीं चाहिए। तो चलो फिर वो मैप देख लेते हैं। यहाँ पर आपने तो देखा ही होगा कि अब तक जो सिचुएशन बना उनमें टीम हालाल ATR नोवरेपना ब्रिज पार नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो कर पाएंगे। ये नोवरेपना ब्रिज के बाद वो आएंगे सीधा सामने, लेकिन सामने जैसे आएंगे उनके सामने टीम स्काई फोर्स रहेगी, और टीम स्काई फोर्स के साथ यहाँ पर टीम हालाल ATR की एक बैटल आप देख पाओगे। सबसे पहले तो ये पहली गेम है और 5 गेम्स है आपके लिए पर डे, तो इसका मतलब ये होता है कि टीम हालाल ATR उनको भी पहली गेम से पॉइंट लेना है। अब जो एलिमिनेट हो गए DRS T2 के, उनके पास सिर्फ उनकी पहली 1 और 2 एलिमिनेशन से मिलेगी। फिर हिडन लीफ स्पोर्ट खाली हाथ वापस आएंगे। फोर इनको लकी का 2 पॉइंट मिलेगा उनको, और टीम मैड उनको भी 2 पॉइंट मिल जाता है। वहाँ पर मैं देखता हूँ कि निक 2 पॉइंट लेते हैं। क्या बात है, निक बहुत अच्छे खेलता है। अब हालाल ATR उनको हम देखेंगे, लेकिन उनके साथ यहाँ पर उनके जो स्प्लिट्स वो भी हम देखेंगे। देखिए गॉडलेस बाहर उतरते ही खुद भी नॉकआउट हो जाएंगे, लेकिन जाते जाते किल सिक्योर करा जाएगा। फिर आईसी वो सामने आएंगे और आईसी अकेले ही अब कंटिन्यू करना पसंद करेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है खुद के सिवा कंटिन्यू करना। ठीक है, ग्राफिक्स अच्छा लग रहा है, ये बताओ, ये पानी आपको अच्छा लग रहा है ना ग्राफिक्स? क्योंकि मैंने अभी कोशिश करा, नींद से अभी उठा मैं, सब कुछ बहुत जल्द करना पड़ा मुझे। देबियो आप देख रहे थे, नहीं सज्जनों भी है, सिर्फ देबिया नहीं है, सज्जनों भी है मेरा। तो देबियो और सज्जनों आप देख रहे हैं वॉरफेयर क्लैश सीजन 2। तो पहली गेम है इसलिए मैं मजा कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि किसी भी टूर्नामेंट की जो पहली 3 गेम्स होता है, उस पहली 3 गेम्स में टॉप से बॉटम शफल होता है, मतलब नंबर 1 से नंबर 18 तक वो शफल आ जाती है। जिसके बाद 4th गेम से हमारी कंपटीशन बनती है। तो यहाँ पर तो 5 गेम्स है, मतलब जो पहली 4 गेम्स बनेगी, उस पहली 4 गेम्स के बाद 5th नंबर गेम पे भी हमारी कंपटीशन चलेगी, और 2 दिनों की कंपटीशन है, मतलब 10 गेम्स की ग्रैंड फाइनल्स है। तो इसके चलते हुए आपको ये तो समझ में आएंगी ही कि 10 गेम्स मतलब आपके सामने टारगेट है 100 पॉइंट की। तो अगर आप वो 100 पॉइंट ले लेते हो तो अच्छी बात है, पर गेम आपको 10 पॉइंट मेंटेन करना है, और उस 10 पॉइंट के लिए सभी के सभी टीम्स तैयार है। चलिए फिर देखते हैं बहुत दिनों के बाद टीम ASL को, एब्रप्ट स्लेयर्स को। अब कैप्टन चारी गैंगस्टर्स हैं, इनको देख लीजिए, इनके प्रिपरेशंस हालांकि बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ से टीम ASL स्काउट करती है और उन्हें पता लग जाता है उस किटी सो स्वीट के बारे में। यस, ये हमारे सामने ब्रेक है, टाइन्स है और सुपरमैन है। मैंने अभी तक कमेंट नहीं पढ़ा, तो स्टैट्स ग्लिच्ड, हाँ वो सही हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में वो सही हो जाएगा। देख रहे हो आप, वो सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है ना चलो फिर चलते हैं फाइट की तरफ, क्योंकि फाइट देखना मुझे बहुत पसंद है, और आपको भी पता है कि मैं फाइट ज़्यादा होता वहीं पे चला जाना पसंद करता हूँ। तो अभी नींद से उठा ना, तो इसलिए कुछ वक्त लग रहा है, ये मैं पहले कह चुका हूँ, बार एक्सक्यूज देना मुझे पसंद नहीं है। आबिर हुसैन, बेस्ट ऑफ लक ऑल, टेक क्लब क्विरकी, ग्राफिक्स लुक इनसेन, थैंक यू सो मच। एक गेमर जेरी, ये तो होता, ओ जेरी इक्वल्स ये तो होता, अच्छा थैंक यू। नेक्स्ट हेलो या हाय। और रंजन श्रेष्ठा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। और नेपाली बोलूँ ना, हाउ नहीं, हिंदी एक गेमर कास्टर, यस दिस इज क्विरकी फॉर यू ब्रो। क्या अवस्था ब्रो? जिनेश भाई, अरे वेलकम ब्रो। जी 50 के 5 पॉइंट्स এর জন্য কোয়ালিফাই করতে পারলাম না, ইস রে। কিলার ওয়াইডি জি ডিআরএস, थैंक यू। जीडीएफ शैडो बहुत हंस रहे भाई, इंटरनेट है ना। स्टैट ग्लिच तो सही हो जाएगा।
गेम मोड नाइट चाकी के हो नहीं नोफियर दाई, ये अल्ट्रा एच डी टू आर अल्ट्रा एच डी है। आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, रुको। ये लोअर थर्ड का है, ये देखो नीचे दिखाई दे रहा है आपको अल्ट्रा एच डी। तो ये अल्ट्रा एच डी ग्राफिक्स है ना, तो इसलिए नाइट नाइट थोड़ा लग सकता है क्योंकि वो आसमान है ना, ये आसमान बिल्कुल अल्ट्रा एच डी है भाई, तो अच्छा लगता है। चलो फिर अब यहाँ पर सीधा टीम एसएल के पास चलते हैं और देखते कि कंपाउंड के अंदर तो फंस गए, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। कैप्टन चारी, गैंगस्टर जेन, इनकी जो जोड़ी है ना, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही अभी के लिए सिचुएशन है। तो चलो फिर वो डिले पे आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर सबको वो बैलेंस्ड ग्राफिक्स देखना पसंद है, लेकिन ऑफिशियल पे भी ये अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स ऐसे नहीं आते, उस पर भी आसमान बैलेंस्ड ग्राफिक्स से आता है, लेकिन फिर भी 2K ग्राफिक्स से आता है। अच्छी बात है, तो जितना कोशिश हो सका मैंने वो करा। अब ये जोन देख लीजिए, नॉर्थ पे सेवर्नी पे टीम यूजी आपको दिखाई देंगे और स्टॉलवर पे सिर्फ एक ही टीम R4R, उसकी नोवाज वो दिखाई देंगे हमारे सामने, और गाटका से टीम UIA आएंगे। और यही पोचिंकी भी खाली दिखाई देगी, लेकिन पोचिंकी के साउथ पे बहुत सारी टीम्स है, जैसे कि मानो हाला लेटियार वो भी है हमारे सामने, लेकिन फाइट एक दूसरी जगह चलते हुए दिखाई देता है। और इस फाइट में टीम आरएस सामने रहेंगी, जिसके बाद हम देखेंगे टीम आरएस के साथ नॉट योर पियो, साइको और नॉटयोर पीटू यही हमारे सामने थे। और एशियल की अमूल्या वो भी यहाँ पर थे। लेकिन बात करा जाए उनकी फाइट की, तो नॉट योर P10 यही सिर्फ अकेले खिलाड़ी यहाँ पर बचे रहेंगे, जिनको सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और इनको करना है क्लाचे पे। सिर्फ पहली गेम है और पहली गेम से वो जितना पॉइंट हो सके शिकेट कर ले, वो अच्छी बात बनेगी, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी गेम और तीसरी गेम बनेंगे ना, उन दोनों गेम पे उनको शफल्स मिल जाएंगे, क्योंकि पहले 3 गेम्स है और हमें पता है पर टूर्नामेंट पे वो पहली 3 गेम्स टॉप टू बॉटम शफल लाते हैं, जिनको दिखाई देंगे। और यहाँ पर जम शॉट चाहते थे, जिगल गॉड चाहते थे कि फिनिश लेना, और उन्हें वो फिनिश मिल भी गई। टिमारिस या सो टिमारिस की 4 पॉइंट्स, अच्छी बात है। पहली मुकाबला आप जीत रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात होता है। अब ये देखो, ये ग्राफिक्स आपको पसंद आ रहा है? ये नाइट मोड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये तो डे मोड है और आसमान बहुत रंगीले हैं, लेकिन नाइट मोड मतलब वो ब्लू जोन के लिए दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। चलो वो सब कुछ देखते हैं बाद में। ये जोन हमारे सेंटर शिफ्ट बनता था, लेकिन अब ये सेंटर के साथ कुछ साउथ में भी आएंगे। पोचिंग की लोकेशन को पूरा का पूरा यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी क्या बात है। अब ये मैप की बात ऐसी है कि साउथ में टीम है, नॉर्थ में टीम है, लेकिन वेस्ट और ईस्ट ये दोनों का दोनों जगह यहाँ पर खाली दिखाई देगा, जिसके चलते हुए आप ये कह सकते हो कि ये दोनों जगहों से बहुत सी टीमों की रोटेशन हो रही है। लेकिन वो बहुत सी टीम नहीं, सिर्फ 2 ही टीम बनेंगे जिनकी रोटेशन यहाँ से आप देखोगे। ओके, तो यूजी जो नॉर्थ से आ रहा है, अभी के लिए इनकी जो पैथ है वो बहुत ही सेफ पैथ है, क्योंकि ईजी को रोकने वाला कोई नहीं और गेट करने वाला भी कोई नहीं। तो यूजी शांति से ऐसे आगे चलता जाएगा। और कास्टिंग एंड रीडिंग कमेंट एट द सेम टाइम, सो गुड, थैंक यू सो मच। किरी सो स्वीट लीड लेते हुए आएंगे और जेन को टेक डाउन करा जाएगा। 4 ही सामने रहेंगे और मैं ब्रॉडकास्ट भी तो कर रहा हूँ ना, सेम टाइम मैं ब्रॉडकास्ट भी कर रहा हूँ। और ये देखो टीम ASL के 4 ही, उनको जंप करके नीचे से आके फिर फिनिश करा जाता है। 1 for 1 सामने आएंगे और 9-1-1 क्या तो ये पहली नॉक निकाला जाएगा। जहाँ पर भी बैटल है वहीं पे क्वेरी की और के, तो यहाँ पर 9-1-1 वो हमारे सामने और उनके साथ उनके अकेले खिलाड़ी सीरियस। आप शायद ही देख चुके होंगे कि टीम 1 for 1 ने ना पहली मुकाबला जीत लिया था और 4 पॉइंट वो ले लिए थे, लेकिन वो 4 पॉइंट काफ़ी नहीं है, उनको और भी पॉइंट लेना चाहिए। तो बात करा जाए और भी पॉइंट्स की, 1 for 1 वो पॉइंट्स के लिए ही पोचिंकी के अंदर आए, लेकिन ये पोचिंकी फाइनल जोन पे भी रहेगी शायद, मुझे ऐसा ही लगता है। आसपास में बहुत सारी टीम्स है, 13 टीम्स है अभी भी, ये 3rd स्टेज है और 13 टीम्स। आपको ये पता चल ही चुका होगा, टीम्स बहुत सीरियस हो चुके हैं और उनकी सीरियसनेस बहुत दूर आगे आ चुका है। ओके, एलिमिनेशन वाला नहीं चाहिए हमें,
तो हम एलिमिनेशन नहीं लाएंगे, ये मैच एलिमिनेशन हमें नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर टीम RX उनके हॉक, लूसीफा, सुडो या फिर हाँ सुडो और लूफी, ये चारों के चारों खिलाड़ी। लेकिन पोचिंकी के पास, और वो क्या करती है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। चलो बॉटम से जो जितने भी टीम्स हैं ना, उन सारे के सारे टीम्स को एक बार देख लेते हैं ज़रा। मेहदी राहत, मैक्सटनूब और ये कौन है, ये फैल्कन की टैग्स लेकर के IQ मी वर्सेस 4, या तो अच्छी बात है। अब ये जोन के ईस्ट में दिखाई देंगे आपको, थर्ड स्टेज है और भी 40 सेकंड्स का वक्त इनके पास आगे आने के लिए। वही 4 डेथ मशीन को मैं देख सकता हूँ किल फीड पे, और 4 डेथ मशीन रोजो केरिया से यहाँ पर बैटल के अंदर इंगेज्ड हो जाती है, जिसके बाद उनके पास वो 2 एलिमिनेशन अंक भी आते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है और भी पॉइंट उनको चाहिए। तो जिसके चलते हुए वो राइवल्स की व्हीकल को देखते हैं, और 7 शॉट्स की जो व्हीकल थी इसके ऊपर बहुत सारे शॉट्स निकाला गया, लेकिन ये बंदा, ये खिलाड़ी अपने टीम्स के साथ दोबारा से रिग्रुप कर पाएंगे, क्योंकि रिग्रुप करना यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सा है। और वो रोजक में फंसे हुए थे, तो रिग्रुप करना उनके लिए बहुत ही चाहिए था, मांग रहा था वो। फिर ब्लाडी हमारे सामने रहते, और ये स्क्वाड के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, ये AVG और पारा लगता है। लेकिन टीम पारा के साथ अगर हम आते हैं तो एब्सोल्यूट, संडी वाइटी, फिर रोहित, 9 बॉट, 911 और ब्लाडी XX, ये चारों के चारों खिलाड़ी हैं। लेकिन जोन ऐसे ले लिए वो कि पूरा कंट्रोल ही उनके पास है। अब ये देखो कंट्रोल, इसके बाद करा जाए तो नॉर्थ की पूरा कंट्रोल ये रूइंस की टीम पारा के तरफ से देखोगे, लेकिन वेस्ट पे रार या फिर R4R वो सोलो दिखाई देंगे, और UG भी वहीं पे आते हैं। अब जो उसको शायद ही पता चल सकता है कि नोवास वो कंपाउंड के अंदर है कि नहीं, या फिर आसपास के जितने भी टीम्स हैं उनकी जो रोटेशन है उसके बारे में तो पता चल ही जाएगा। अब ये जो कि ये पता चल चुका है कि टीम पारा या फिर टीम पैरा वो कंपाउंड के अंदर आ चुके हैं, तो इस कंपाउंड में दखलदारी नहीं दिया जा सकता टीम UG की तरफ से। तो अब टीम UG आसपास में घूमेंगे फिरेंगे और सीधा उस नोवास के कंपाउंड के पास आके पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड खाली दिखाई दे सकता है उन्हें। अगर कंपाउंड के पास एक व्हीकल उन्होंने देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि वहाँ पर कोई ना कोई तो है। अब हलाल ATR की रोटेशन तो देखो, उन्होंने क्या करा, पोचिंगी के पास से आए और अच्छी जगह उन्होंने पकड़ लिया, जिसके चलते हुए 141 उनके पास दिखाई देंगे। लेकिन उनके आसपास में और भी टीम्स है, जैसे कि मानो टीम RXS, टीम राक्षस हो सकते हैं, और टीम MVK, हाँ MVKE, वो भी हमारे सामने होंगे। लेकिन 4 डेथ मशीन उनकी तरफ से यहाँ पर लॉन्ग रेंज का नॉक निकाला जाएगा, और यहाँ पर 4 डेथ मशीन सिर्फ लॉन्ग रेंज ही नहीं, उनके प्लान्स भी हैं कुछ कूल उनके हाथों। यहाँ पर नॉक निकालने के बाद अब टीम 4 डेथ मशीन सीधा स्लैमिंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि सामने 2 नॉक निकल के आए हैं और बचे हुए सिर्फ 2 ही खिलाड़ी। लेकिन जाते जाते इनके ऊपर यहाँ पर तटपाड़ी हो जाती है, जिससे किलमोंगर हो जाते हैं नॉकआउट, और पीछे से अब इनको स्मोक सबसे पहले डालना है ताकि ये कवर ले पाए। वही UG के बाद में अलग से क्या ही करूँ, UG भी फाइट के अंदर दिखाई देती है हमारे सामने, और अब UG के 2 खिलाड़ी यहाँ पर सिर्फ नॉकआउट ही नहीं फिनिश्ड ही दिखाई देंगे, क्योंकि नोवाज उन्होंने यहाँ पर क्लाच करा। अब जगह जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए, क्योंकि ग्रेनेड्स यहाँ पर आएंगे, और ग्रेनेड्स आने से पहले ही नोवाज ने अपना जगह चेंज कर लिया था, तो 2 ही ग्रेनेड्स आए थे, वो दोनों वो डॉज कर लेंगे। लेकिन अब स्प्रे भी आएंगे, और मॉडल को पता चल चुका है कि नोवास कहाँ पर है, तो स्पैम डाला जाता है। फिर भी वो जो स्मोक डाले थे, उस स्मोक से उन्होंने कवर भी ले लिया, हील अप करने का भी एक मौका वो खुद ब खुद बना लिया, जिसके चलते हुए टीम पैरा की तरफ से तटपाटी दिखाई देती है, और मॉर्बिड वो संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मॉर्बिड की हालत बहुत खराब है, नोवास सामने आते आते मॉर्बिड को भी फिनिश कर लेंगे। नोवास फ्रॉम टीम R4R 16 खिलाड़ी, ये टीम UG के 3 खिलाड़ी को छुट्टी निकाल देते हैं। फिर टीम हलाल ATR सामने दिखाई देंगे, और मैटकट के हाथों यहाँ पर नॉक निकाला जाएगा, पहली नॉक। लेकिन ये पॉइंट अभी काफ़ी नहीं है, उनको और भी पॉइंट चाहिए, और टीम RS को यहाँ से फिनिश करा जाएगा। पीछे की तरफ टीम 1 दिखाई देंगे, और चार्ज की तरफ आते ही टीम हलाल ATR के जो खिलाड़ी है वो एक ही साथ लेकिन 1 उनको पता चल जाएगा हलाल ATR कहाँ से आने की कोशिश कर रहे हैं।
वही टीम फोर्डिथ मशीन किल फीड पे, यहाँ पर टीम AXETRON 1-for-1 के साथ। लेकिन ये 5वां नंबर जोन है, मतलब 5th स्टेज है, और 5th स्टेज का मतलब ये है कि आपके पास वक्त थोड़ा कम है, जल्द से जल्द ये बैरल कंप्लीट करा जाए। वहीं पे और भी कोई बैरल चल रहे थे, और टीम फोर्डिथ मशीन राइवल्स वो फाइट कर रहे थे टीम YA के साथ, और टीम YA तो अब नहीं बचे, लेकिन MVKE उनके सुपरमैन की तरफ से पीक को नॉकआउट करा जाता है। फिर फोर्डिथ मशीन की कुल वो किल फीड पे आते हैं वापस से, फिर सीरियस खुद की ही ग्रेनेड से नॉकआउट दिखाई देंगे और किलमोंगर ब्रेक को नॉकआउट करेंगे। फिर कुल क्या तो वही नॉक निकाला जाएगा 9-1 क्या तो 6-9, फिर मैट कैट, फिर हिटमैन अकेले खिलाड़ी बचे रहेंगे। AXETRON की 1-for-1 ने दोबारा से संभाला सिचुएशन, और यहाँ पर हिटमैन अब उनकी तरफ से कोशिश रहेगी कि 9-1-1 को यहाँ पर नॉकआउट करा जाए। अब 1v1 यहाँ पर बनेगा हिटमैन के साथ। हिटमैन को पता चल चुका है, शॉटगन यहाँ पर चार्ज हो चुका है, और हिटमैन फिनिश भी कर लिया जाएगा उनकी तरफ से। बहुत अच्छी तरीके से ये 1v1 संभाला जाएगा हिटमैन के हाथों से, और AXETRON की हिटमैन बड़ी अच्छी खिलाड़ी है, इतनी अच्छी खिलाड़ी है कि उनकी तरफ से तो यहाँ पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, और वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाया गया हिटमैन के हाथों से। 8 टीम्स बचे रहे, 5वां नंबर जोन, और इस जोन के बाहर की तरफ देखिए ईस्ट में वो फोर्डिथ मशीन, लेकिन 2v2 स्प्लिट बनाता हुआ एक तरफ नॉर्थ गार्ड करना चाहते हैं वो, और दूसरी तरफ ईस्ट भी वो गार्ड करना चाहते थे, लेकिन स्काई फोर्स अच्छी तरीके से वहाँ पर सरवाइव तो कर रहे हैं। अब फोर्डिथ मशीन से पहला नॉक, और टीम पारा की एब्सोल्यूट क्या तो वो राइवल्स की नॉक निकाला जाता है, फिर राइवल्स खुद भी इनकाउंटर में नॉकआउट हो ही जाएंगे। लेकिन फोर्डिथ मशीन अपना जो डुओ स्प्लिट था, एंगल था, वो एंगल अब उनका नहीं रहेगा। फिर टीम राइवल्स की जो खिलाड़ियाँ हैं उनको फिनिश करने की कोशिश यहाँ पर करा जाएगी। अब ये 5वां नंबर जोन है, आपको तो पता ही है डैमेज बहुत कटने वाली है, और डैमेज के साथ साथ अगर स्प्रे लगता है तो क्या होता है, बूम। फोर्डिथ मशीन 10 एलिमिनेशन लेके 6th स्टेज की नॉर्थ से आएंगे, और अब तो उनके पास सिर्फ एक ही टारगेट है कि जल्द से जल्द नए जोन के अंदर आया जाए, क्योंकि वहाँ पर और भी सारे खिलाड़ियाँ हैं। अब हिटमैन को हील अप करनी है, और हील अप करने के बाद हिटमैन सुपरमैन को देख चुके हैं, लेकिन हिटमैन के पास और भी कोई फर्स्ट एड किट नहीं है, तो बाहर की तरफ से फाइट करने सिवाय और कोई चारा उनके पास नहीं था। फिर सुपरमैन वो सामने आएंगे और यहाँ पर हील अप करने की कोशिश करेंगे, तो हील अप कंप्लीट हो चुका है। तो उससे पहले मैं ग्रेनेड चाह रहा था, लेकिन ग्रेनेड यहाँ पर नहीं आया, और सुपरमैन को वो मौका मिला कि वो हील अप जल्द से जल्द कर ले। फिर सामने जो 3 खिलाड़ियाँ हैं ना, टीम एले की या फिर टीम राक्षस की, वो राक्षस की एक खिलाड़ी मैं देख सकता हूँ, हॉक को, लेकिन सुपरमैन उनको तीनों को रोकना है। और ग्रेनेड आते ही ग्रेनेड फटते हैं, और सुपरमैन की कुछ HP यहाँ पर कटते भी हैं। लेकिन क्या बात है कि MVKE सुपरमैन वो यहाँ पर शॉटगन के साथ पहला 1v1 निकाला। वाह क्या बात है, क्या बात है, वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड थे। फिर पीछे से लूफी, उनका नॉक निकाला जाता है। ओह भाई क्या बात है, सुपरमैन ने एक नहीं 2 नॉक निकल रहे थे। अब ये ग्रेनेड तीसरी नॉक भी फिनिश कर देंगे, और ये ग्रेनेड सीधा जाते ही फटते हैं, लेकिन काम नहीं बनता। फिर मोलोटोव डाला जाता है, वो भी जाते हैं, काम नहीं बनता। हाँ मोलोटोव कनेक्ट हो जाएगी, वो नॉक कंप्लीट हो जा सकता है। और रेस्क्यू हो गई थी, लेकिन वो रेस्क्यू भी फिर से नॉकआउट करा लिया गया था। सुपरमैन, ये सचमुच के सुपरमैन निकले। सिर्फ 1v2 क्लास ही नहीं, पूरे स्क्वाड को यहाँ पर रोक लिए अकेले खिलाड़ी ने। किलमोंगर की हालत बहुत खराब है। टीम पारा उनके पास इंफॉर्मेशन आ चुका है, सिर्फ टॉप 3 टीम्स है, और फोर्डिथ मशीन उस टॉप 3 टीम्स में आते हैं, लेकिन कुल वो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन किलमोंगर उनकी तरफ से ही छोटी HP से एक नॉक निकाला जाता है, फिर इसी 1 HP से दूसरी नॉक पे निकाल लेंगे और किल भी फिनिश करा जाएगा। लेकिन ग्रेनेड आएंगे, और ये बात किलमोंगर को शायद ही पता था, लेकिन पता चलने के बाद भी किलमोंगर वो हील अप नहीं कर रहे थे, क्योंकि शायद उनके पास कोई फर्स्ट एड किट नहीं था या फिर वक्त। लेकिन अब बात करा जाए टीम पैरा की, तो उनके 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर बचते हैं, जिन दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे को रेस्क्यू करना है सबसे पहले। फिर रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पर एक 1v2 दिखाई देंगे। ये पहली गेम है दर्शकों, आप देख रहे थे वॉरफेयर क्लैश सीजन 2 ग्रैंड फाइनल्स की डे 1 की ये पहली गेम है, और पहली गेम की जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या है, खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है बीरू। अब सुपरमैन जिनकी तरफ से अपने देख चुका है कि एक अकेला खिलाड़ी कैसे 3 खिलाड़ियों को रोक लेता है। अब उनके पास पूरा जोन आके पहुंच जाएंगे। सिर्फ 20 सेकेंड उनके पास। पहले स्मोक यहाँ पर डाल दिया गया ताकि कुछ कवर वो ले सके, कुछ कवर के साइड से निकल सके, और यहाँ से वो पिक कर सके और नॉक निकल सके, और ऐसे एब्सोल्यूट को नॉकआउट करा जाएगा सुपरमैन की तरफ से। ये लो पहली 1v1। अब सैंडी वाइट वो अकेली खिलाड़ी है,
और उनके साथ सुपरमैन को करना है 1v1। लेकिन सुपरमैन सबसे पहले यहाँ पर ग्रेनेड डाल लेती है, लेकिन वो ग्रेनेड जाते ही सैंडी वो भी बच जाएंगे। उनके पास वो हिल साइड था। 1v1 तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन सैंडी के पास तो मैं आ सकता हूँ ना। ये लो सुपरमैन वो 1v2 करेंगे और ऐसे ही सुपरमैन उनकी ही हाथों से चिकन डिनर भी सिक्योर करा जाएगा। अकेला खिलाड़ी साउथ रोक लेते हैं और नॉर्थ भी रोक लेते हैं। साउथ पे 1v3 कर लिए थे वो, फिर नॉर्थ पे भी 1v3 वो कर लिए। और चलो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड लाते हैं और जो चिकन डिनर है वो भी लाते हैं। ओ हाँ, उससे पहले मैं चिकन डिनर सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा हूँ। लेट अस सेलिब्रेट द चिकन डिनर फ्रॉम द टीम MKVE या फिर MVKE या सो ऐसा ही कुछ टैग था। अभी तक तो टीम के नाम मेरे हाथों पे नहीं लगा, लेकिन लग जाएगा अभी अभी लग जाएगा। ठीक है, तो ये लोगो वहीं पे रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये हाँ रह जा तू भाई, रह जा। वारफेयर क्लैश वो नीचे की तरफ ही, अब देखो कोई बात नहीं। चलो फिर अब चिकन डिनर वो तो आपने देख ही लिया है, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ वो चिकन डिनर की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो विनर चिकन डिनर गोज फॉर टीम MGN Viking Esport. Wow. That is team MGN Viking Esport, and that's why the tag was like MVKE or yeah, that was the tag because V सबसे पहले आता है। अब 19 पॉइंट तो सिक्योर कर चुके इस गेम से, जिसके तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि 9 एलिमिनेशंस तो थे उनके पास, और कुल मिलाकर 19 पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है उन्हें। फिर यही हमारी ओवरऑल लीडर बोर्ड बनती है बे। अब मैच रैंकिंग्स वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हेड टू हेड में कौन था वो भी देखना ज़रूरी है। तो हेड टू हेड में भी वो सेम इन्फॉर्मेशन है, तो चलो फिर मैच रैंकिंग्स थोड़ा बहुत निकल लेती है। अब MBKE के पास 19 पॉइंट, फिर 16 पॉइंट इम्पोर्टेड मिशन के पास 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स था उनकी। फिर राइवल्स की तरफ से 11 पॉइंट्स टोटल, 9 एलिमिनेशंस थे। टीम पारा उनके पास 10 पॉइंट, वाह क्या बात है। ये टॉप 5 टीम्स को अब देखो, नॉट योर टीम के पास भी 9 पॉइंट है। फिर स्काई फोर्स के पास 7 पॉइंट है। कभी भी ये कुछ भी हो सकता है। 1 for 1 उनके पास 6 पॉइंट्स है। हाला लेटियर के पास 6 पॉइंट्स है। RXS के पास 5 पॉइंट्स है। टीम RS के पास 4 पॉइंट्स है। टीम R4R उनके पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको दिखाई देगा। फिर जो दूसरी पेज है, पायदान है, कुछ भी कहो आप, वहाँ पर टीम DRS है 2 पॉइंट लेने के बाद। टीम 4 योंको लाकी कैट भी है 2 पॉइंट लेने के बाद। टीम मैड भी है 2 पॉइंट ले लिया उन्होंने। टीम T2 के 1 पॉइंट ले लेंगे। और टीम ASL, टीम हिडन लीफ, टीम UG, टीम YA और टीम TBM, इनकी तरफ से आप कोई भी पॉइंट इस बार नहीं देखोगे। फिर जो मैच की फ्रैगर्स लिस्ट है वहाँ पर देखो तो टॉप प्लेयर्स लिस्ट में सबसे आगे आएंगे सुपरमैन, फिर आएंगे कूल, फिर आएंगे विवेक OS, फिर आएंगे 911 और अमूल्या जी और अमूल्या जी। वो अमूल्या नाम से बटर होता था, मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट देखता था, आपको याद है क्या? तो चलो फिर सुपरमैन को सबसे आगे देखेंगे और फोर्डेथ मशीन की कूल को भी देखेंगे, क्योंकि आप सभी को ये पता है कि फोर्डेथ मशीन के खिलाड़ी कुछ भी करो वो किलफील्ड पे रहना ज़्यादा पसंद करती है। और कूल उनको सबसे पहले ही मैं देख लेता हूँ, जिसके बाद मुझे ये पता चलता है कि सुपरमैन के साथ कुल के एक 1v1 यहाँ पर बनेगी, वो भी MVP लिस्ट में। लेकिन ये तो सिर्फ पहली गेम है बच्चों, और बाकी के जितने भी गेम्स आएंगे ना उनके साथ यहाँ पर शफल तो बन जाएगी। अब ओवरऑल जो रैंकिंग्स वो कैसा आता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नए रूम के अंदर आना पसंद करूँगा। ओके, चलो फिर मैथ की जो IDP है वो मुझे मिल चुका है। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट लाने के साथ साथ रूम के अंदर आ लेता हूँ, ताकि कोई मैच मैं मिस ना कर दूँ। बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैचेस है भाई, ये 10 गेम्स है और
ডেথ স্টর্ম একটা গ্রেনেড দিয়ে ক্লাচ করছিল এমভিকে। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, এমভিকে ভাইকিংস। अच्छा अच्छा, थैंक्स थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक्स ब्रो। फिर ओवरऑल फ्रैग्स तो आपने देख ही लिए, यही मैच की फ्रैगर्स है, यही ओवरऑल फ्रैग्स है। ओके, तो फिर हम जो ओवरऑल रैंकिंग्स वो थोड़ा देखेंगे। सबसे आगे टेबल टॉपर पहली गेम के बाद एमजीएन वाइकिंग ई स्पोर्ट 19 पॉइंट्स। तो अगर आप दूसरी गेम पे 19 से ज़्यादा पॉइंट ले लेते हो तो आप शफल कर दोगे। 4D मशीन 16 पॉइंट्स, नाइस। सिर्फ 3 ही पॉइंट्स की गैप है, ये 4DM ना, कभी भी ये 3 पॉइंट चुका लेंगे। टीम राइवल्स 11 पॉइंट्स और टीम पारा 10 पॉइंट्स। नॉट योर फायर नेशन उनके पास 9 पॉइंट्स, स्काई फोर्स के पास 7 पॉइंट्स। हलाल एक्सेट्रॉन के पास 6 पॉइंट्स, नाइस। हलाल एटीआर अच्छे खेल रहे हैं। 1 for 1 ऑफिशियल 6 पॉइंट्स। रक्षास ई स्पोर्ट 5 पॉइंट्स। वाह, RXS टैग से मुझे पता चल गया था कि ये रक्षास है, वैसे तो मेरे पास कोई स्लॉट लिस्ट नहीं। वो रूइंस के साइड से 1v3 कर लिए थे यूजी के अगेंस्ट में, क्या अच्छा नज़रिया था और अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात, वो सिचुएशन के साथ चलते हुए फाइट कर रहे थे। फिर रियल सैवेज, DRS गेमिंग, फॉर योंको, लकी कैट, मैट बुल्स ऑफिशियल, टीडुकी स्पोर्ट, इनकी तरफ से भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स सिक्योर करा लिया गया। लेकिन ये पहली गेम ही तो है ना, और फिर दूसरी गेम काफ़ी होगा वो नंबर 1 टीम शफल करने के लिए। ASL, हिडन लीफ, यूजी, यंग एशियंस, YA उनकी टैग थी, हाँ। और TBM स्पोर्ट ये हमारे साथ ऐसे दिखाई देता है, तो अच्छी बात है। चलो अब ओवरऑल जो रैंकिंग्स वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन इसके बाद अब शेड्यूल्स भी थोड़ा देख लो, क्योंकि 5 गेम्स है और मैच की शेड्यूल के बाद अलग से मैं क्या ही करूँ। पहली गेम पे जो क्या कहते हैं इसे, ठप्पा या फिर हाँ ठप्पा किसने लगाया, टीम MVK ने, MGN वाइकिंग स्पोर्ट ने। और उसके साथ ये सिग्नेचर किसने लगाया, सिग्नेचर कह देते हैं, चलो चलो सिग्नेचर कह देते। तो पहली गेम की सिग्नेचर MGN वाइकिंग स्पोर्ट के पास है। और भी 4 गेम्स हैं बीरू, लेकिन वो जो थर्ड गेम आप देख रहे हो, ये थर्ड गेम तक नंबर 1 to नंबर 18 शफल आएंगे। फिर 4th और 5th गेम से हमें पता चलेगा वो गैप के कंपैरिजन कितना है, लेकिन वो कंपैरिजन अभी के लिए शुरू हो चुका है। 3 पॉइंट की गैप है 4D मिशन के साथ, MGN के साथ। और बॉटम की जो टीम्स है वो भी अच्छे तरीके से आएंगे। तो चलो फिर यही से कुछ शेड्यूल्स के बाद हम आते हैं कस्टर्ड डेस्क में। हाँ, लेकिन मेरी बैकग्राउंड ऐसे ग्रीन क्यों आता है, मैं यही सोच रहा हूँ। भेजी तो मैंने चेंज कर लिया। ओह अच्छा, वो ग्रीन दिखाई देता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ चेंज कर लेता हूँ, रुको। ये हाँ, ओके। अब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? वो बैकग्राउंड की, मेरे लोगों के पीछे जो बैकग्राउंड है वो दिखाई देता है तो अच्छा लगता है, या फिर ये दिखाई देता है तो अच्छा लगता है? वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके हिसाब से वो चेंज कर लूँगा, ठीक है? हाल ही में मुझे खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बैकग्राउंड पे वो रख देता हूँ, मेरे लोगों के पीछे वाली जो बैकग्राउंड है वो। यो कास्टर मैन परीना, ओके। नेपाली स्पोर्ट्स टीम हारू छ, कास्टिंग कितना हिंदी में हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। कास्टिंग किना हिंदी में हो, अच्छा अच्छा हिंदी में हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा अच्छा, भूल गया मुझे, नहीं नहीं भूला मैंने आपको, कैसे भूल सकता हूँ ब्रो। मैं सिर्फ 3 ही लैंग्वेजेस में कास्ट करता हूँ, बंगाली, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर अब 3 लैंग्वेजेस में कुछ भी मांगो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है? और नेपाली लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लगता तो है, लेकिन
अभी तक उतना ज़्यादा प्रैक्टिस मेरी नहीं है नेपाली लैंग्वेजेस में करना। शायद मेरी चौथी लैंग्वेज नेपाली हो सकती है या फिर और भी कुछ हो, या अल्लाह हबीबी, वो मैं सीधा सीधा सऊदी अरब की लैंग्वेज में कंटिन्यू कर लूँगा। तो बात ऐसा ही है। अब कंपटीशन की बात करा जाए तो ये दोपहर की वक्त है और दोपहर में मैं सोता हूँ, तो सोने के बाद अगर मैं उठ जाता हूँ तो मुझे थोड़ा रिफ्रेशमेंट का वक्त चाहिए होता है। लेकिन जो मैच की टाइमिंग से और मेरी जो नींद की टाइमिंग से दोनों का ना सिनर्जी नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा है कि मुझे मैच की टाइम के हिसाब से सही रहना था, लेकिन नींद भाई इतना था ना कि मैं क्या कहूँ। सपना देख रहा था, कितना अच्छा सपना देख रहा था पता है। आपकी भाभी के साथ मिल रहा था मैं, और वो तो मैं मिल ही रहा था। तो इसके लिए मुझे और क्या ही कहना है, इसके लिए मैं ना थोड़ा ज़्यादा देर नींद में सो रहा था ताकि और भी कुछ सेकंड्स में देख लूँ। तो उसके चलते हुए मैच में आने में थोड़ा जल्दबाजी करना पड़ा मुझे, जिसके चलते हुए मैं रिफ्रेशमेंट का कोई वक्त नहीं ले पाया। तो पहली गेम कंपटीशन के हिसाब से चलता बना, लेकिन अब आपके सामने ये दूसरी गेम की शुरुआत हो चुका है। हमारी सेकंड गेम स्टार्ट हो चुका है और सेकंड गेम की जो फ्लाइट पे आते हैं वो इल्पोजो से स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाते हैं शेरा ब्रॉन्ड कहाँ पे। एक एक करके जो 20 टीम्स है सारे के सारी टीम्स अपने जगह चले जाएंगे। सबसे पहले ये टीम पारा वो जंप करने की कोशिश करेंगे रुइंस पे। फिर यहाँ पर टीम यूजी के साथ टीम आरएस की एक लड़ाई होते हुए आप देख सकते हो लाद्री लारा की तरफ। ये सब जंप करना पसंद करती है और टीम एसएल भी साउथ थोड़ा आएंगे। ये जो फ्लाइट पे थे हमारी ये कुछ नॉर्थ तरफ से आते हैं, तो नॉर्थ सपोर्टेड फ्लाइट पे आते हैं, तो जोन बिल्कुल साउथ में बनता है। आजकल जो भी फ्लाइट पैक होता है उसके अपोजिट पे जोन पड़ता है, तो इस बार नॉर्थ पे फ्लाइट पे आता है तो साउथ पे जोन है। अब लॉस लेनेस वहाँ पर तो जोन आती है, लेकिन फोरियन को लकी कैट के साथ सबसे पहले यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अब ये देखो टीम डीआरएस गेमिंग वो भी यहाँ पर सबसे पहले हेड एंड फाइट में रहेंगे, लेकिन सुपरमैन के हाथ तो मिनी फोर्डिन थे और येता उता को मिनी फोर्डिन से ही नॉकआउट करा लिया गया। फिर किटी सो स्वीट उनके हाथों से किलर वाइटी नॉकआउट और सुपरमैन उन्होंने एग्जाम्पल को भी टेक डाउन करा। फिर देखते ही देखते 4 पॉइंट्स टीम एमवीके सिक्योर कर लेंगे डीआरएस गेमिंग के साथ। ये कैसा फाइट था, एक पल में वो फाइट कंप्लीट कर लिया था टीम एमवीके ने। भाई क्या ही बात है, MVKE, हाँ इनकी खिलाड़ी के नाम टीन्स है या फिर टाइन्स है, सुपरमैन है और वो टाइफुन्स है क्या, कोई बात नहीं। और किटी सो स्वीट नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदी बोलो, नेपाली भाषा बोलो ना भाई, क्या बात है, और बांग्ला और इंग्लिश, ओके ब्रदर ठीक है, थैंक यू ब्रो, आपने तो बहुत अच्छे से समझ लिया। तो हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं नेपाली सीखूं तो वहाँ पर कमेंट पे आप नेपाली लिख सकते हो, मैं वो पढ़ने के साथ साथ समझ सकता हूँ कि कौन से लाइन से क्या मीनिंग आता है। तो जैसे मैं मीनिंग समझ लूँगा तो उसके बाद मैं वो प्रोनाउंस कर लूँगा, इसका कॉन्फिडेंस मुझे है। लेकिन मेरा हिंदी थोड़ा पाकिस्तानी भी लग जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लगता है, उर्दू। लेकिन हिंदी में ज़्यादा सिनेमा में देखता हूँ, तो इसलिए उर्दू तो मुझे पसंद है और सिनेमा तो मुझे हिंदी दिखाई देता है। तो इसके चलते मेरी हिंदी ना थोड़ा हिंदी उर्दू मिक्स्ड है, तो आपको मज़ा आएगी। चलो अब राक्षस को देख लो। यहाँ पर राक्षस वो फाइट करते हैं और यहाँ पर लीड भी मिल जाते हैं उनको, लेकिन उनके खिलाड़ी पहले नॉकआउट भी दिखाई देते हैं, जिसके चलते हुए लूसीफर को वो मौका मिल भी जाता है ताकि वो रेस्क्यू कर ले। अब रेस्क्यू करना और एक ही साथ फाइट कंटिन्यू करना दोनों अच्छी बात होती है, लेकिन फाइट 1-for-1 के साथ भी बनेगा। अब यहाँ पर टीम राइवल्स आके क्या करते हैं, स्काउट करते हैं, और टीम स्काई फोर्स हिडन लीफ स्पोर्ट उनके साथ ऊपर फाइट चलता है। लेकिन टीम हिडन लीफ ने एक नहीं 2 नॉक यहाँ पर निकल रहे थे टीम एसएल के अगेंस्ट पे, और टीम एसएल भी अब रेस्क्यू कर लेंगे, लेकिन कैप्टन थोड़ा पीछे है, तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन के हाथ। और जेन ने क्या करा, रेस्क्यू लेने से पहले उन्होंने रेस्क्यू करने से पहले उन्होंने एक नॉक निकल दी और उसके बाद फिर रेस्क्यू कंप्लीट करने की ठान ले रखा है, जिसके चलते हुए फ्रैग को ये पता चला कि रेस्क्यू करने के लिए जेन बैठे हैं, तो अभी ये मौका है। लेकिन जाते जाते जेन ने क्या करा, रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया, जिसके चलते हुए फ्रैग उनको कोई एंगल नहीं मिला जो एंगल उन्हें चाहिए था। और फिर स्लेयर चारी को टेक डाउन करेंगे और फ्रैग के हाथ वो किल सिक्योर करा जाएगा। जेन के हाथों स्लेयर दोबारा से नॉकआउट दिखाई देंगे और एक ही साथ चलते चलते यहाँ पर निंजा वापस आएंगे और इस बार जेन को नॉकआउट करा जाएगा। 1-for-1 के 9-1-1 वो रिले को टेक डाउन करती है और वहाँ पर टीम 1-for-1 वो भी फाइट के अंदर दिखाई देंगे आपको। लेकिन यहीं पे बात करा जाए तो कैप्टन
काफ़ी हद तक लो एचपी बन चुका है उनकी, और उनके हाथों डीवीएस तो थे लेकिन मौका नहीं मिला उन्हें वो चार्ज करने की। हिडन लीफ की लिक्विड के हाथों वो किल सिक्योर करा गया, और फिर हम 1-for-1 के पास आएंगे क्योंकि सबसे पहले जीबीएन खत्म है, लेकिन फिर भी 2 फिनिशेस टीम 1-for-1 के पास। अब ये देखो कंपाउंड के अंदर वो बैठे रहेंगे, उनके चारों तरफ 4 योंको लकी कैट, और 4 योंको को ये लीड मिल चुका है। ये फाइट सैन मार्टिन पे बनते हैं और पीछे की तरफ टीम स्काई फोर्स भी आते हैं, लेकिन स्काई फोर्स का ऐसी कुछ कर नहीं करते हैं, वो सिर्फ बैठ के सब कुछ देखते हैं क्योंकि उनके 3 खिलाड़ी जिंदा ही नहीं बचे यार। अब तो आईसी सोलो ही खेलेंगे, लेकिन फोर्डेथ मशीन, अब अगर उनकी खेल को देखते हो तो फोर्डेथ मशीन भी अच्छे खिलाड़ी है। सिर्फ 3 ही पॉइंट्स की गैप थे उनके साथ टेबल टॉपर्स का, और उनमें पहला पॉइंट वो सिक्योर कर चुके हैं। लेकिन वो जो टेबल टॉपर टीम है ना, एमजीएन वाइकिंग स्पोर्ट, वो वाइकिंग स्पोर्ट ने भी अपना पहला मुकाबला कंप्लीट कर चुका है, जिसके चलते उनके पास भी 4 पहली पॉइंट रहेगी, वो भी डीआरएस की तरफ से। तो वो 4 पॉइंट के साथ लीड अब 7 पॉइंट की बन चुका है, और ये फोर्डेथ मिशन से पहली पॉइंट यहाँ पर सिक्योर करता हुआ अभी भी 6 पॉइंट्स लाइव रैंकिंग के हिसाब से टीम फोर्डेथ मिशन को चुकाना है अगर वो टेबल टॉपर के साथ अभी इसी मैच के साथ compete करना चाहते हैं तो। फिर बात करा जाए मेहदी की, तो यहाँ पर मैक्सटन और मेहदी ये दोनों ही खिलाड़ी रहेंगे, लेकिन 2 अलग अलग एंगल से वो चाह रहे थे लीड ले पाना, लेकिन मेहदी के एंगल्स खराब था। और जहाँ पर बात करा जाए फोर्डेथ मिशन की, तो उनके जो फ्लैंक्स थे वो अच्छा था, तो फ्लैंक्स के चलते हुए वो दोनों तरफ एक साथ पुश कर रहे थे, जिसके चलते हुए पीक 4 के हाथों से फाइनल के लिए यहाँ पर सिक्योर करा गया, और टीम फोर्डेथ मिशन वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया उनकी पहली बैटल। फिर भी वही 3 पॉइंट्स के गैप है, क्योंकि जो टेबल टॉपर टीम थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी ये देखो पहली 4 पॉइंट वो सिक्योर कर चुके थे। तो यस, कीटी सो स्वीट के स्क्वाड के हाथों 4 पॉइंट्स है, और टीम फोर्डेथ मिशन के पास भी 4 पॉइंट्स है। वो तो लाइव रैंकिंग से आपको पता चल ही चुका होगा, जिसके चलते हुए आप ये समझ लेना कि जो 3 पॉइंट्स की गैप थी वो अभी भी 3 पॉइंट्स की गैप ही है। और टीम MVKE मतलब एमजीएन वाइकिंग ई स्पोर्ट, एम से एमजीएन बनता है, वीके से वाइकिंग बनता है, ई से ई स्पोर्ट बनता है, तो MVKE ही ऐसे टैग बनता है उनकी। ग्रेविएट की तरफ आएंगे वो, लेकिन मैप मुझे ओपन करना है क्योंकि मुझे पता लगाना है कहाँ पर बैटल्स है। अब 4 योंको लकी कैट वो सैन मार्टिन पे होंगे, और उस सैन मार्टिन के फाइट को हमें देखना है क्योंकि 1-for-1 यहाँ पर ही तो थे। अब सीरियस उनको यहाँ पर नॉकआउट करा जाएगा बीपिन के हाथों नहीं, वो 4 योंको लकी कैट के हाथों से ही। लेकिन वो कौन थे, फियरलेस या फिर पांक थे? नहीं, यू कैन सी मी इसके हाथों से थे, लेकिन मैं जॉन सीना को प्रेफर करता हूँ, और जॉन सीना कहते हैं यू कैन सी मी। लेट्स टॉक अबाउट टीम 1-for-1 वोल्ट्रक्स 911 दोनों खिलाड़ी, लेकिन सीरियस को रिस्क्यू नहीं कर सकते वो, और सीरियस के साथ यहाँ पर मजाक चल रही है। यू कैन सी मी सीरियस के साथ यहाँ पर पुश करेंगे या कुछ क्या करेंगे, वो स्क्वाट करेंगे अपने पैर के साथ। वो जो जिम जाते हैं उन्हें पता है स्क्वाट क्या होती है। अपने कंधों पे कुछ वजन ले लो और स्क्वाट करो ताकि आप अपने पैर से खड़े हो सकते हो, और ये काम करते हैं टीम 4 योंको लकी कैट। उनको जिम जाना है भाई, लेकिन मैच की शेड्यूल सी ऐसी होती है, बीरीबी मैचेस होते हैं पर डे, तो वो जिम नहीं जा सकते। क्या होता है, एवरीथिंग सेज 0, एवरीवन इज अलाइव। हाँ, लेकिन वो भाई मैनुअली डालना पड़ता है वो लाइव रैंकिंग, तो मैनुअली डाला जाएगा, वो कुछ ही वक्त में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पहले थोड़ा वक्त लगता है, बाद में सब कुछ सही हो जाता है। अब लाइव रैंकिंग ही तो है, कुछ और तो नहीं है ना, तो मज़ा आएगा देखने में। वहाँ पर इंफॉर्मेशन जैसे आप देखोगे वैसे ही मज़ा आएगी। मेरा काम सिर्फ ब्रॉडकास्ट और कास्ट करना, वो रिजल्ट की काम मेरे पीछे मेरे दाई करते हैं, और वो रिजल्ट आपके लिए बखूबी अच्छी तरीके से लाएंगे ताकि आप मज़ा ले पाओ, क्योंकि कंपटीशन का एक मज़ा तो होता है, कौन सी टीम क्या डिसीजन लेते हैं उसके चलते हुए आप मज़ा ले पाओगे। लेकिन वोल्ट्रक्स की जो प्री शॉट्स थे, उन शॉटों पे यहाँ पर एक नॉक निकाला गया, पंक नॉकड आउट होते गए। वैकेंसी में बाहर की तरफ से देखते हैं, और उनके हाथों पे क्या थी, वो M249 थे, और M249 एक ऐसा वेपन है जिसके चलते हुए आप कुछ ही सेकंड्स के लिए सिर्फ स्प्रेस ला सकते हो, और यहाँ पर एक जंप शॉट से ओह नो 1-for-1 से 1v3, 1-for-1 की 911 उन्होंने 1v3 क्लच कर लिया। एक अकेला खिलाड़ी पूरा सिचुएशन संभाल लेती है, 1v3 क्लच कर लेती है 4 योंको लकी कैट के अगेंस्ट। क्या बात है 911, ये इमरजेंसी सिचुएशन पे कैसे क्लच करा।
अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फोर्थ मिशन की जो डोमिनेशन है वो दोबारा से शुरुआत हो चुका है। तो फोर्थ मिशन के पास अभी के लिए 5 टोटल एलिमिनेशन पॉइंट आप देखोगे, और कोई भी खिलाड़ी को नहीं खोया फोर्थ मिशन ने, जिसके चलते हुए अब उनके साथ टीम वाई ए की एक बैटल बनेगी। और टीम वाई ए की बात मैं क्या ही कहूँ, ये फेथ और गोजो दोनों खिलाड़ी है, लेकिन गोजो स्क्वाड के अंदर है तो हॉलो पर्पल शायद ही वो यूज़ कर लेंगे। और हॉलो पर्पल क्या गोजो यूज़ करेगा, वो मोस्ट पावरफुल पावर है उनकी एक आंखें नील भी है। तो ये देखो प्राइम भंजा, उनके हाथों से फेथ नॉकड आउट है और गोजो एक अकेला खिलाड़ी। लेकिन उन्हें ये पता था कि गाड़ी लेकर के जो आते हैं ना, वो या तो सीधा व्हीकल रन ओवर करेंगे या फिर गाड़ी से उतर के उनको टेक डाउन करेंगे। ये पता था उन्हें, कोशिश कर रहे थे प्लेयर को देखने की, लेकिन वो खिलाड़ी उसको मौका नहीं दिया। तो फोर्थ मशीन अब क्या करा, दो स्क्वाड की एलिमिनेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट करा, जिसके चलते हुए कोई भी खिलाड़ी की खत्म नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए तो वो अपने पूरे रोस्टर के साथ जितने भी गैप्स थे पॉइंट्स की, वो गैप चुका लिए। लेकिन 16 टीम्स, यहाँ पर 20 टीम्स थे बीरू, और 16 टीम्स अभी है। मतलब ये जो दोनों स्टेजेस है, 2 स्टेजेस में सिर्फ 4 ही टीम्स की एलिमिनेशन हम देख पाए। अब विवेक वो गाड़ी लेकर के पीछे की तरफ जाएंगे, और उनके गाड़ी की जो स्किन है वो भी अच्छी है, क्योंकि स्किन के हिसाब से उनको डैमेजेस थोड़ा कम मिलेगा। चारों तरफ ये व्हीकल की स्किन ही ऐसी है कि आप स्प्रे भी करो फिर भी ड्राइवर सीट को पकड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो विवेक O5, ये विवेक O05 है क्या? तो सलमान भाई किधर है भाई? फोरियन को लकी कैट उनके साथ 1-4-1 की फिर से चल रही है, और इस बार तो 9-1-1 को ही टेक डाउन करा लिया गया। लेकिन शायद वोल्ट्रक्स वो रेस्क्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो रेस्क्यू कर लेंगे। चलो फिर वी वांट बीके जी अच्छा ठीक है, जस्ट वाचिंग बिकॉज ऑफ द टीम। ओके फिर तो मुझे आपके सामने अच्छे तरीके से कास्टिंग करना चाहिए, है ना, सीरियस तरीके से कास्टिंग करना चाहिए। तो चलो फिर आज मैं सीरियस बन जाता हूँ। Ladies and gentlemen, there are 14 teams. This is 1-4-1 in front of you, Voltrex and 9-1-1. And Voltrex has been taken down by NOTYOUR P10 with him for 16. That was such a good shot. And this time I can see that team 9-1-1, he can come here and take the responsibility, as the responsibility is so close. So yeah, that's good. But before the team reaches here, he should rescue the player. Now team 4th machine comes on the kill feed and takes another lead, not one but 2 leads. You can see that the 9th elimination and the 10th elimination has been completed, but this guy Novus has made an 1v3 class. But look at him, how he changed his own position and tried to do a clutch here, but no more chances, as Cool 7-7 would come in front of him and take the player down. Now team R4R, they have the final pair, and this final pair has to do the clutch against 4th machine, and that's a shotgun. Dude, that was a shotgun, and Killmonger stick it the knock just like that. This is team 4th machine for you, eliminating 3 teams on the second stage, securing 12 elimination points for now. And you can see the ranges between the team and the zone, right? That's 1200 meters, so they have to cross that meter, and they have to reach to the zone. But from the northern, it says there are no other teams to make the gatekeep, so this team can clearly make an entry onto the zone, and nobody is gonna be interfering with them. But team 1-4-1, and that San Martin battle, that says this time team 1-4-1 would become solo, and still team NOTYOUR is not giving up. They're not giving it up. Now 1-4-1, they are not anymore, and this time they have been eliminated. But I can see that team 1-4-1 taking total 6 eliminations from the side. That is good, right? That is good. So let us talk about the teams right now. Those are surviving. You can see the zone is clearly heading for the Impala and Los Linus. I hope Los Linus would be the next area to be supported just like that. But team Hidden Leafy Sport has taken such a good split. I can spot that they're taking the Red Hill side so that they can get engaged with, but the Red Hill has been taken carefully by the team HLXs, and that means team HLX
is already here, so you cannot come to this red hill, but there will be lots of teams after just this stage or the next shift of the stage, and that means you have to fight with not just one, but according to the information, three teams at the same time. Three teams at the same time. You can guess that, right? Yeah, but I'd love to watch out for other teams too, as I was not being able to go for the teams. So I'm a passionate caster, right? And that means that I'd love to watch out every team, and this time it's the team tagged as Mad. I see Pain, Flashing Q, Thor, and a Japanese guy, and the team is getting so ready. They have their weapon preparations, they has their side, and now all they need to do is to gather the informations and make out the rotations for their plan to be executed, and then the battle should go on. But for the team Para, where Manish, Bloody, Sandy White, and Absolute comes inside, I've seen Absolute to take some responsibilities, but according to the information, team Para is not getting into any battles for now. Even if we talk about team RAKSHYAS, and yes, the team is also good, has completed the first eliminations, and now they has the 3 points, but not enough. There's losing, they have already losing Sudo, so that means Sudo will be not anymore here. I see team TDK Sports close to them, and that means we'll be available to watch out for Ajaya, Rules, OG, and TDK Ilya, and then Igneous. Is it Ilya? Yes, Ilya. Yeah, Ilya, Ilya, कुछ भी हो भाई, नाम कह देना मुझे, ठीक है? You can correct me if you want to, if I make any mistakes according to the pronunciation. It is indeed team trained to kill ESPORT in front of you, and on the very third stage they have taken the edge, right? But the zone is completely shifting on the other side. It's taking the Impala side, and the Impala has become a center point, a major point for now. And on the zone, you see that team 40th mission taking the north, so that means team RX is in trouble, and anytime team 40th mission are gonna come inside, and then the next battle is gonna be between team Hidden Leaf ESPORT. So team Hidden Leaf were so close to the squad, anytime the battle could be started. They are beside the compounds, and now the live rankings. This is the overall stats, and मुझे overall rankings देखनी है, तो yeah, not match rankings. I'd love to see the overall stats here. Now you see the overall stats, right? But the battle has been started between team TDK Sport and team 40th Machine. But team TDK Sport with team Halal or not? Okay, I'd see the later. Team Para being executed. Superman comes in again. This player plays so good. I've seen him playing the first game, taking the chicken dinner alone by making the clutches from the north to the south. And now it is indeed the same player, Superman again, from the team MG and Viking Sport. Now has taken the charge on the edge of this third stage, where lots of teams are surrounding them, and that means they doesn't have enough time, and now they need the support. Now Psycho comes up with a knock with Tins, and Superman understands that he needs to go too close to the player with the buggy so that he can go for the rescue mission, as long as he has the flank position, so he can go with the knock-ins. But Madcat from Team Halal comes in on the kill feed and takes or makes a knock, and that means Team Halal ATR is also engaging with the battles, and that means this is gonna be the first battle from their side. Not any single elimination points. Okay, but now you find seriousness in the casting? I hope so. I hope so. Look at that. Team RSS being interrupted. Team Halal ATR is trying to flank them down. Team Mad is so close to the rivals, and Halal ATR secures the knocks, but the casualties, the chaos is just only happening to the south and only to the west. Now Halal ATR
is securing their kills, the knockouts. That's good. It's the very fourth stage, and you have lots of things to do. Only the 12 teams are surviving, right? And then if you talk about not yours, then you know the team is absolutely crazy. By the name, they're so crazy. They are so close to the team MG and Vikings, and right now, they need to be very careful. It's Superman and Break. Obviously, they're gonna take some leads, but Psycho has taken down Curious Sweet. After her, it was Superman to take the charge, and then Superman made the knock, but still it got taken down in an encounter, and that means Team NOTYOUR understood what to do right now. Getting close to the compound and trying to take down the final player inside of the compound. That's a shotgun. You need to be very careful because that can come up with the clutches. As Break has taken down Amulia G. There goes the first knock, and now it's P10 taking the next knockout. But Break has made the second knock too. Break is making out clutches. It's the third knock. You see Break making out 3 different knocks, and now making it possible for Superman to survive again. But Psycho knows where to deliver the grenade next. He delivered the grenade, but the grenade decided whether Superman and the player would survive or not. That was Break, but Psycho's grenade decided Team MG and Vikings would be decimated for now, as Psycho has taken the responsibility, and now all of the rescues would be done as like that, and the team would stand on the feet again. Next zone is completely shifted to the opposite on the previous, according to the previous zone. But you see the team 40th machine taking the edges and also securing the kills in the middles from the edges. That means they have such long hands, and you know they can do the interruptions as soon as possible. Now you see the north, it's Team ESPORTS taking the splits in a 2v2, and they can gate the northern eastern. Also they can watch it for the team that's on the midwestern. Yes, midwest north, that's Team UGs. But for Team Halaletia, it's Madcat scouting throughout the eastern side, so that he can watch it for Team 40th machines, and the rest of the 3 players are on the south and east, so that they can watch it for the south. But there goes Team Mad and Team RS close to them, and now it's time for Team HLX to deal with the players. I was reading out the map. I was actually watching out for the plans for the team, so that I can understand what's the plan and what's going on inside of the game. You see Amulia G was so prepared to shot some ammo here to connect with Liquid, but at the end it is Liquid. Getting so close to the first knock, man, but not been available. Now the 5th stage comes here, and the 5th stage says, you know, you are in trouble, because the next zone is completely supporting Team 2K, and 2K is getting the center point. Team 40th mission is also having the zone, and now it's time for Team Halaletia to go from the south. And then if we talk about Team Mad and Team RSS, then it's obviously Team Maddox, because they're gonna head in from the south, and Team Halaletia has got a lot of responsibilities, because they have to not only deal with Team 2K and Team 40th mission, at the same time they have to deal with Team Maddox too, and that's a big responsibilities, right? Okay, so we're down to top 10 teams, and you see lots of teams are waiting to make it inside, and now Team HLX is just heading for the edge side. Not that good. HLX in trouble. That was Paramanish, and yeah, he would be also decimated. It was Frag to take in the final kill, but 40th machine in trouble. Team Halaletia fighting with Team 40th machine. Oh my goodness, did you see that? After losing Madcat, Team Halaletia has gone a bit too aggressive, and now it's time for Team Halaletia to, move forward point to point. And now it's Team Halaletia charging with the 40th machine. According to the information, they are fighting with 3 different teams. Now ESPORTS is completely inside the compound, and they have the cover that is needed on this very 5th stage, because they are so secured with the blue zone. The blue zone cannot touch them. The teams cannot get them on the outer cover side. But for now, it's Team Maddox losing the teammates, and then there comes Team Halaletia securing the knocks. Now it's Hitman charging towards Team Maddox. I was talking about the situation
Like Team Halaletia has gotten the players. And look at them. Hitman. That was connected. That knock was made. But Maddox secretly made it possible to eliminate Team HLX. Now the Southern totally counts for the territory for Team Maddox, and they can go for the rescue. They can next move forward for the next zone. But Team Halal ATR in trouble. And I see Team TDK Sport taking the leads. But I have to... Okay, is another live rankings is in Discord. Okay, I got the next live rankings. This is match ranking. That is overall ranking. Okay, I just have to change the live stats. There we go. I changed it. And now it's in front of you. Halal ATR charging for Team T2Ks. Halal ATR is inside on the top 6 teams. Now Mamba was getting the visuals against Cool 77. Lots of damage has been dealt, but after the damages, Team Halal ATR takes the charge, but Hitman would be taken away. And Cool 77 taking Hitman down. That was so early, but it's Team 40th Machine. They knows how to defend, right? So if you ever go out with the vehicles, make it sure that you have gotten a player on your back for the ADS. I mean, Mamba should have the, should have charged here to make it possible for Hitman to reach down there, so that they doesn't get any damages, right? You understand me? Yeah, so for the machine is just charging the ladies, and Mamba somehow survived, but the next zone would be touched and Mamba is eliminated. We are down to top 5 teams, yet Team Halal ATR played well, finished the game on top 6. Now it's Team Maddox being interrupted, not your team being also interrupted by Jiggle God. Yes, from Team Maddox, that was Jiggle God, but it is indeed Team TDK Sport from the compound. Now the compound side says you are in the safest place possible, but still not been able to get in that kind of cover. Team 40th Machine still made it possible to survive in the top 4 teams, and right now Team 40th Machine can go for the chicken dinner. Yes, indeed, Team TDK Sport in the compound, but Team 40th Machine knows how to defend from this location. They have executed the plan. They have started it. Now charging the smokes, using the smokes, they are making the gates or the covers, you might say, but they only has the 3 players, and that means they can only make the triangle possible here. And now Prime takes the middle, Killmonger takes the back end, and Cool takes the front end, so that he can hold for Team TDKs. But TDKs also needs to get out of that compound. But now we get 4 teams, right? So Jiggle God has on the southern side, slightly a bit of western, but he can look out for the western, right? And that's the western side. You see the Team NOTYOUR holding onto the western side. They're on the edge. Jiggle God is on the edge. TDK is on the edge. Team 40th Mission is on the edge. Nobody's in the middle. But Team TDK is getting such advantages of this stage, because the rest of the 3 teams cannot get close to the zone, but only Team TDK Sport can get the advantages. Now the situation says the blue zone would be difficult for Team 40th Machine as soon as they need to make a decision and make a move, but the interruptions are so deadly as Jiggle got interrupted right now, taking down Prime Vanja, and the kill getting stolen by Igneous, but Cool 77 made it close to the compound, and Killmonger eliminated the player, but the player gets decimated by the zone. Now it's only the 2 teams. 40th Mission is in solo, and Cool 77 getting eliminated. TDK Sport taking the chicken dinner on this game. Let us celebrate the chicken dinner right now, and let's see what happens, right? Let's see what happens. I see the overall rankings. That's not needed right now. So let's talk about the chicken dinner. And talking about the chicken dinner, trained to kill esports, they are here, and they are taking the chicken dinner for now for you guys. And now how that BG came in, I do not understand. I was changing the BG, right? Okay, but still the BG was changed. I do not know why. Okay, I can change the BG again. Yeah, it is indeed the BG. But that BG, that was interrupting. Congratulations for Team TDK Sport for winning the second chicken dinner, and that goes the comeback.
They've taken 17 points in total by taking 6 eliminations with the chicken dinner. Rules OG knows how to rule on. Yeah, congratulations. Now, I would like to talk about the head to head situations. And the celebration is done. Let's talk about the head to head situation. And it was winning team to get him 40th machine, but 40th machine, how much points they were taken, we'll see for that. And then if we look forward, then it's team 40th machine, man. At the end, it is indeed team 40th machine to be taken 23 points in total. That's so nice and so great. 23 points. Wow. Even without the chicken dinner, 17 eliminations were there. So the new table toppers are team 40th machines. You already understood that. Then, yes, sir. NOTYOUR's getting 15 points on the top 3. And then we see the top 3 teams securing the double-digit numbers, but 40th mission is more beneficial for now. Team RS taking 9 points. Team 141X taking 6 points. Team Aditya taking 6 points. Team HLX means Hidden Leaf taking 6 points. 5 points for Team MVKE. And Team Maddox taking 5 points. Team RXS taking 3 points. Team YONKO Lucky Cats taking 2 points only. On the second page, I would be able to see Team UG is taking 2 points, Team SF's taking 1, SL's taking 1, Team Para taking 1, Team Rivals taking 1, Team DRS, Team YA, Team Arfura, Team TBM not getting any points from the game. But the Math Fraggers, the list says this time the Math Fragger would be Cool77, the MVP for the second game with 7 eliminations, and then it comes for Psycho with 5, Killmonger with 4, Prime Vanja with 4, and Jigglegod with 4 again. The overall fraggers, the list that says the overall fraggings has got a good shuffle here, and the fragger list would come as soon as possible. Would see that later, but the overall rankings, that's also good. And maybe I need to change the overall rankings. No, I do not need to change that. This is good. This is best. 40th machine is on the top. After just 2 games, it's literally almost 40 points. You see that 39 numbers. So there goes the competition. You can see the differences. But for the third game, there will be a new shuffle and the teams would come up again. But you see that Team MG and Vikings getting 24 with the same number as NOTYOUR FIRENATION's getting 24. Nice. The competition is a neck to neck between the top 3 teams. Then Team ESPORT, by getting this chicken dinner, they only has the 17 points and they have made it to the top 4 till now. Then it's Team Real Savages getting 13 points, Team Aditya getting 12 points for Team Rivals, 12 points for Team 141 Officials, 12 points for Team Rivals and 141, right? Oh, well, and also for Team Aditya, 3 teams with the same numbers. Team Para Official getting 11 points, RAKSHYAS ESPORTS getting 8, and on the second page, I'd like to see the point rankings. Skyforce getting 8 points, Mad Bulls getting 7, Hidden Leaf getting 6, Ready for Events getting 4, YONKO Lucky Cat getting 4 points, UG Will Spirit getting 2 points, DRS Gaming getting 2, ABRUPT Slayers getting 1, and Young Asians getting nothing, TBM Esports getting nothing from the game. Now, you look forward for the schedules. The first 2 games being eliminated, being completed. ESPORTS has come up with their logo standing or marked as a marker on the Miramar game. Now 3 games are left only, and now I'd like to take a little bit of break too, but let's go for the caster desk. That is my breaking zone. Yes, it's my breaking zone. Now you can talk in Bengali, but casting in the Bengali language is not easy. You can talk in Hindi. Hindi can be a native language, but casting in Hindi is not that easy. You can talk in English, you can know English, but casting in English is not that easy because there are some sequences you need to follow. And according to the health, you need to be sure. Like, okay. Let me get the next IDP. I got the IDP. I need to make it inside in the room. And why after by knowing a language still the casting is not easy? Why is that? Anybody knows that? I think not. Wait, give me a second.
because to do cast in a language you need to have lots of informations in your hand, so that you can deliver the informations at the right time, because lots of shifts are coming, right? And on the very fourth and fifth stage, on the sixth stages, it's just lots of informations running at the same time, and you need to switch the words according to the scene, not according to the with the information and according to the scene, and that means it's tough. So those casters are doing it good. Obviously there has a lot of practice, but for me, I do change the languages much quicker. Like previously I was starting this stream in Hindi, and now I'm in English. So you see that the language is not so easy. It's never too easy to switch the language in English and not doing any mistakes, and that's all, Lord. Now on the cassette disc, I'll let you take a little bit of break, because as you know, according to the information, I just woke up earlier, just some minutes ago. Before the first game starts, I was okay. I was awake for before the match starts. I was available just before 3 minutes. So I hadn't freshened myself, and that's why my vocal is not so confident for now. And I see the result. Let me see. Oh, okay. So the internet says it's in the loading. Oh man, it shouldn't be. Okay, now the stream is smooth. There was lots of drop frames. Okay, but now there shouldn't be any drop frames. If it is, then I'll just turn on the 111 VPN for you guys, so that you don't get any. Yeah, let me turn on the VPN. Now I turned on the VPN, and that means the internet should be stable for now, from now, and there should be no loading. The match has been started. I'll be back in the game in just any seconds, okay? So let me clear out the schedules, yeah. Overall live stats, that's needed, and BG. Okay, enough. Enough now. I'm back again. Ladies and gentlemen, welcome to Warfare Clash Season 2. The grand finals are here.
And on the caster desk, I'll be your only single host named as Quick called as More. And now I would love to practice the stream in English. Yeah, I'm just the only caster who practices a language on a final stage. I hope you'll enjoy. Now look at the flight path. The flight path has been started from military base, and it's ended on the Kamishki corner. And the Kamishki corner says, the zone can be on Gatka pਹੁੰਚेंगे meta, but it should be on military base. And over the zone is a bit of quirky, cause it just happens on different places, but I hope it should be on Gatka according to the meta. Like the flight path gets put in on a single side, and the zone gets on the opposite. But the zone this time is different because not every time it's the same, and now the zone is completely centering shelter as the center point. But on the starting of the game, I see team Hull ATR getting the first drop flash battle with team 1-for-1s. Wow, now it is team Halal ATR with team 1-for-1s, and there you see 6-9 Mamba and Hitman. The 3 players are left only, so that means match guy has been decimated. And now it's a 3v4 situation where team Para and team MVKE are also getting engaged. There are lots of battles happening. Team Psycho and team Hidden Leaf is engaged, and team NOTYOUR fighting with team HLX2, and that means team HLX, they're in trouble right now. They're just losing out to the teammates, but they should retaliate as soon as possible. Superman comes in again, and on the kill feed he takes the lead. Then Gojo, that is Gojo been in the trouble. Team YA engaged with a battle too, and it's from the side of the Stalber side. I hope so. Yes, it is indeed in the Stalber side. There is team R4R and team YA fighting in a head to head, but I see team Mad 2 getting continued to the same location. Now the grenade is in the hand of Lois, and he can charge the grenade towards the second floor. There I see team TBs fighting with the players. Para taking the lead again. MVKE in problem for now. Superman doesn't has the HP. Break doesn't has the HP. Kirisu Sweet only has the possibility to actually make some supports here, but the vehicle as loses the tires, and it's so difficult. It is so difficult. Bloody just needs the reload for now. Superman break. It is such a bad idea. And now the player Kitty, so sweet. How she so sweet, man. Oh, she knew that the VSS needs a lot of time to reload, but still it was not possible. It was never possible, man. So sweet. A Kitty so sweet, tried so hard, but bloody takes 3 eliminations. What was that? I do not know. I cannot even say that what was that. Now 3 different places for the Drockless battles. Yes, after this one there were only 4 places to which we witness the battles, but for now it's team Halal ATR I'd like to watch for. That's the military base location where the battle is happening on the C compound, and you see the battle, it's still in the 3v4 situation. It's taking a lot of time. My tongue twisting is on because I haven't get freshened yet, and I'll not get enough time to get freshened because I was wasting time while I was sleeping. I should have been prepared earlier, but tomorrow it'll be not like today. It'll be different. It'll be more hyped, and it'll be more aggressive. But yeah, today it'll be still hyped too. You just have to wait and watch. For now there is no hype situation. It's only the dropless battles. Team Halal ATR with 6-9 Mamba 20 and Hitman. But it is indeed a hyped battle. Now 6-9 has taken the first knock. Hitman Mamba is so close to them. Now Mamba takes the grenade. Sirius loses the HP. Now 6-9 tries to take the second knock too, but 6-9 was getting taken away by Sirius, and then Mamba taking the charge. Then Hitman being taken away by Zibian, and now it's on the other side. Mamba alone. He'd go for the rescue, and but he won't get enough time to make the rescue, right? But comes here. The spams with Mamba would be decimated, and 1-for-1 would be winning these drop clash battles. Yeah, but 1-for-1 is the winner here.
And Team 4 Yonko Lucky Cat understands where the 1-for-1 is. They comes here clearly to take the fight. Yes, Punk has scouted, has made the entry, and now he has the grenade in hand. So he just looks forward. He gets some loot. There is a scope. Okay. Now Hidden Leaf eliminates Team NOTYOUR. Frag gets the final kill. NOTYOUR P2, the final player was by Team HLX. Okay. That is also good. HLX Slayer has made the clutch on the side. There were lots of battles it's talking about. But on the military base, it's Team 1-for-1. Team YA taking R4R. And there goes another battle starting. Now Team R4R deals the battle. YA Goku bot needs to make some time because he's just alone, but he won't get any time. Now Lois boss or Lois will be taken out by the third party. That was about to happen by the Maddox. Now the lead comes, and there goes the knockouts one by one. There goes the finishes. Thor has taken 2 finishes. Now Flash and Q Pain, they are available. And Fantasy, yeah, and GRG Zod 777. That's it. Skyforce comes on the kill feed, gets engaged in a battle. Team Terrorist not taking any battle from the start. It's Team TDG Sport, Team Aircells, Team Rivals, Team UG Evil Spirits, Team 40th Machines, Team RSS not getting engaged in any battles till now. Team RXS right now comes in, but we are on a battle, right? But I see Team RXS doesn't love to give me enough time to switch the camera. Now Darius losing the players. Yes, Darius losing not only 1 but 2 of the players. Yeta Uta Cyclone have been taken away. Killer White and Example both are left, but the team they were fighting with, that was Team Sky Force, and that means Team Sky Force losing the players too. Yes, Darius should obviously now let him survive again. Now Killer White changed the seat and tried to make the knock, but Example on the other side getting caught out by Relay, and that means Team Sky Force is having the lead for now. Now it's the third game, and you know what's gonna happen. The third game says the shuffle is gonna come out, and here we go, the shuffle. The Killer Whitey taking not only 1 knock but 2 different knocks. There goes the Team 40th Machine getting so close to this battle, and Cool 77 maybe understands that DRS Gaming would not come close, but they're so busy with Team Sky Forces right now. Killer Whitey would be eliminated, and eliminated by whom? Icy from Sky Force. Now Icy makes the final move, and now they would like to recalibrate themselves as soon as possible, as soon as they can, and then Team 40th Machine would get some damages too. Now would fall back for some seconds. Sky Force versus 40th Machine, the battle is gonna be heavy, but Team RSS maybe gonna come close on the scout here. Like, what's happening here? Let us know and gather the informations. They're gonna gather the intels, but Bambi God is in trouble. M49, M4 Tire. Okay. Common 4DM. The second में बोली होती भाई. Okay. Sandesh ji, thank you for being here. Now I see the zone. The battles are happening onto the Yasnaya side and the Stolber side, and on the center of this farm location where Team Sky Force, Team RS and Team 40th Machine can occur. But to the Yasnaya Poliana side, there was a new team, right? But here we see the teams like RAKSHYAS ESPORT and Team UG Evil Spirits. And you see the Team UG Evil Spirits losing their players. Jolts and Sami is inside of the compound. They has the casualties on the earlier, and now they are not leaving the compounds, because if they tries to from the roof, it's Hawk, whose eye is so acute it can spot the players and take them down. But from the Stolber side, the battle is not ended yet. It's still available. Now it's Fantasy and DRG Zod 777 looking forward for a new angle, for a new painting, and I see that Fantasy and DRG Zod, they tries to
make the revenge. For now, Team SKM, not SKM, it's Team R4R, absolutely a gorgeous team to be said. Now the overall stats have changed that, so change the match ranking too. Yeah. Okay, changed it. Is it the overall right now or the match right now? Okay, not bad, not bad, not bad, not bad. That was so close. Flash and Q eliminated the final player. And now it's Team Mad who will win on this situation. And the battle has been on. And now they only need to get inside and make it inside in the next stage. You see the teams from the side of Pochinki, it's Team Para. Then from Yasna Poliana, that's Team Rakshas and Team Ujivili Spirits. It's Team HLXs. On the Mansion side, Team Rivals making an entry. Team Fourth Machine on the safest side and the coolest side. Team Skyports and YONKO Lucky Cat in the trouble. In the making of the battle, of a new battle. Yes, they're in the making. You see Team Skyforce has taken the first knock, and now it's time for them to get close and make the flanks as soon as possible. Punk understands that they're the players, and Punk, just switches the steering wheel to the next side, and Punk is just moving forward. You love the color, you love the graphics, I hope so. And now you see Punk is just not moving with the vehicle, he's just moving with colors. That's so great. But on the angle Punk is, it's good from the side of his teammates, but for Team Skyforce, this is not such a good place. He needs to move on and he needs to make a good angle here. I feel so sleepy. But Team ESPORTS, let's talk about that particular squad. Taking some retaliation moment here, or taking some reset. Yeah, kind of. Team TDK has taken the second chicken dinner. You remember that on the Miramar game, right? That is nice, right? But this time, Team T2Ks are trying to get consistent. Yeah, so for the consistency, how much would you love to pay Team T2Ks, right? The love. It's Ilya watching out for Gangster, then Captain Charlie and Zane tries to watch it for the back end too. Now Gangster been taken out. This is the first knocked into the game is making into. Now Chari has gotten the angle, and Chari is so close to Gangster and he can get close, and then he can rescue the player. But for this guy, it looks like night vision. Yeah, now I see that. I noticed that. I need to see this from the drone perspective mode so that it looks like a day mode. Team ESPORTS getting close. Ilya gets taken down. Then Chari would be taken away by Ajaya by switching the seat from the driving to the passenger. And then it's Igneous getting taken down again. Now Ajaya, Igneous and Rule Zoji both will be available, but the kill might be secured. Now ESPORTS knows there are two rescues they need to make it, and the player who interrupted is getting close, and the player is Jane. Now Jane would be decimated by a grenade. Rule Zoji is just making it for the grenade. On the other side, Team 40th Machine is fighting, and the fight is so close. It's a close combat. Team Para, Sandy Whitey tries to find out an angle, losing absolute domination of body, and Sandy Whitey gets decimated by Peak 4 by a shotgun inside of the compound. Okay. Now Team 40th Machine has the 3 eliminations. It's just the second stage. The battle has not started yet. ESPORT is on the center. Skyports on the south. YONKO Lucky Cat on the very south too. But Team Rivals, you see them. This is kind of like that moment where you think what to do. Yeah, second stage. Still the second stage. But for the teams and their positions, it's getting difficult to get a new position. Now, if we talk about the competition, then the tabletop point is kind of 40.
And Team 40 Machine has all those 40 points for now, and they're sitting on the top on the leaderboard. And team, Tirigi Sport is on the run to catch them. It's 42 points in total by the side of Team 40 Machine. And I see that, okay, I can get the match eliminations too, right? So, not the match eliminations, but I can see the match rankings. So if I go for the match rankings, how much points the teams are getting? Yeah, these are the points the teams are getting, right? Lots of teams getting eliminated. Some of the teams are left. Team 3K Sports are left. Okay, there is still available the full roster. Is it true? Yes, it is so true. You see the live rankings. Okay. And the live ranking says how much points the teams are getting for now. As Team 3K Sport has started a secondary battle. It's with Team HLX, which tried to get close to Team 3K, tries to make the path for their, for them making into the zone. But on the other side, it's the shelter side where the battle was happening with Team RSS. And Team RSS Jiggle God use the grenade, eliminates the final player, takes total 3 points. The third stage and the 9 teams are available. According to the team's movement, they're so fast and fast enough to make an execution in just 15 seconds, right? There goes Killmonger, takes the player down. That was 4x7 from the side of Team RSS. Real Savages. Then it's time for Killmonger to finish the kill and now witness the team on the compound side so that they cannot change the compound. That's the outside of the zone. And now Team 40th Machine has gotten onto the plan that Team Real Savages should not fall back from here. Now Prime Vanja takes the back angle, but look at the split. Oh wow, look at the angle. Cool 7, what he did, he tried to get close to the team so that the team gets attracted and tries to deal with that from the close. But on the other side, Team 40th Machine made a flank from the back end, and Prime Vanja was there to make the angle. Now after the second elimination of the player, Prime Vanja makes a close in, but Bambi God tries to take the charge in, but he cannot anymore. He's out of teammates and he's out of thinkings right now. But XYZ, what he thinks, it was so late to get out. And the jump shot comes inside. Pick 4 eliminates the final player. Now at the same spot, you have seen Team Real Savages, right? And that was a problem for Team Real Savages to win against 40th Machine of that kind of splits. But now it's time for Team Raid to kill. Do the same with the 40th Machines. Is a cool 77 dealing with lots of damages with Ajaya from 2DKs. Where Matt Payne takes the final kill for Yonko Lucky Cats. Now Lucky Cats will be no more. But on the top 6 teams here. And the top 6 teams says 40th Machine is just making to the consistency. And the table is updated. The table is updated. You should not worry about that. Or you can talk about the overall stats too. But the table is absolutely upgraded for now. Yes, I should to make the overall leaderboard, and you can see the total eliminations taken by the teams, right? Yes, that will be updated as soon as possible. I'm using the overall leaderboard for now. Let us talk about Team 40th Mission. You see they are taking 7 eliminations, and on the live feed you see there 7 elims for them. I hope you see so, and there is no stream interruption, no dropped frames. It's just as smooth as you want it to be. Now the next zone is completely supporting the male telelocation, and lots of teams are on the south, but the only Team TDK is in the north. And there goes the Team 40th Machine getting inside from the north. I hope Team TDK and Team 40th Machine gets engaged. Then Team Maddox, wow, it is so smooth for them to take the eastern side because that is so safe to take in. And then Team Rivals on the south, Team Skyforce on the south with Team UG Evil Spirits, but Team 40th Machine is making it from the western corner, while Prime Vanja is just making it in a bit of delay so that he can continue from the late and he can watch out for the situations and just do his job according to the situations. For now, it's Team TDK Sports taking 6 eliminations, and this is gonna be the second game where they are gonna continue taking eliminations and continue keeping consistency. I hope Team 40th Machine is a top-notch holder
position holder for that, because they're on the top and they only need just 10 points per game. They have only secured 7. And now let me explain to you the difficulties. That is, my electricity is gone. Yeah, so my electricity is gone, and that means my desktop can get shut it down anytime it's possible, dude. It's so possible. Now I'm just reducing the power. It can be a little bit of laggy for now, but it shouldn't be. So let's watch out for the teams, because the stream should not be interrupted. It's the bad time, but the electricity should be coming again. Yeah, the moment I said it, electricity is gone, and my IPS is not that good to make the support for at least 1 hour. It's just for at least 20 minutes, I hope. So yeah, it was the third game, and the third game says I'm enough onto this side. Next, the fourth and the fifth game might be in problem, but I hope so. The electricity should come back, because I'm having some backups. You see the lag here. But the next zone is on the eastern southern side, and goes the team Maddox, taking the eastern at first. If the stream is off, you should understand that I'm off by the electricity. I'm out of options. If it is on, then it is on. So let's hope for the best. Now, fourth machine is just heading in front of Team Rivals, and Team Rivals, there's a head-on battle. Cool 7-7 shorts the weapon, takes a grenade in hand. Is he aware of the Western players? No. Prime Vanja charges the grenade. That gets the knock. Now as the lead comes, and then fourth machine becomes aggressive. Cool 7-7 tries to find out the player. There goes the second knock. Prime Vanja makes 2 different knocks with 2 different grenades, and Killmonger tries to hunt them down. Wow, but not anymore. They cannot hunt the final 2 players for now. Yummy and Vivek 5 minutes to heal up. Flashing Q, encountering with Team TDK. TDK rules OG, taking pain down. Team Maddox and Team TDK Sport in the engagement of the fight, and TDK takes the lead. Okay, Team TDK Sport with 9 eliminations on the northern side. Team 40th Machine on the south. Weakening Team Rivals, as Vivek is the final player here. Now cannot survive anymore. Only the option left is to make the touch. He tries to face the player instead of Vivek tried to make it 1v1, but there is Killmonger, which secured the kill. Now it's UG, Evil Spirits, Joles is here, Sammy is there, and these 2 players are trying to trace Team 40th Machine. Yeah, the trace is happening, but Jules and Sammy won't get any knockouts, but Sammy is getting lots of damages from the side of north and the mid. Only the 4 teams available. It's Team Skyforce, it's Team TDK Sports, it is indeed Team UG Evil Spirits, and Team 40th Machines. But the next zone says it's completely supporting Team 40th Machine, and leaving every other team on the outside of the zone. Now Relay takes the first knock, who'll been taken down. The grenade is coming in front of the location. Team TDK Sport also getting the pressure for Team Skyforce, as Relay is in trouble. He only has the grenade in hand, and that won't do the job. He needed the weapon in hand, not the grenade, at the same time when Team TDK was pushing onto. But Team TDK Sport, yeah, they're looking so smooth, getting 10 eliminations. Team 40th Machine obviously making it so smooth that they has the 11 eliminations, but Team TDK Sport knows that this is the perfect time to make the entry close to the Team 40th Machine, so that they can maintain the pressure and balance the 6th stage, also taking the angles from the 6th stage from the north. But for Team UG Will Spirit, it's the elimination from the outside, because the vehicle got stuck onto the corner side and they were not able to make it inside. But now it's Team TDK Sport
fighting with 40th machine. Yes, gentlemen, you were watching Warfare Clash Season 2. This is the grand finals. Only the 2 days for the grand finals. 10 matches in total. 5 matches per day. This is the third game, and in the third game with Team 40th machine, it is indeed Team Sport. Ajaya taking not just one, 2 players, Killmonger and the player final one also get eliminated. Let us celebrate the chicken dinner. Winner chicken dinner for Team Trained to Kill. Congratulations for T2K for getting the chicken dinner done on this third game. It should be late, but yeah, it is not that late because Team Trained to Kill knows how to come back on the overall leaderboard. Now, Team T2K Sport is just on the second spot with 40 points, and the balance is here with Team 40 machines. There will be only 20 points of a gap, or I guess 16 points of a gap by Team T2K and Team 40 machine, right? Let's hope for the best. Let's see and watch out for the system. Now, the head-to-head situation says the same chicken dinner segment, and then I'd like to go for the match rankings. It is indeed Team T2K Sport getting 23 points, Team 40th Machine getting 17, Team SFs getting 12. The top 3 teams getting the double digits here, making the double digits here. Yeah, that's beneficial. They're making lots of money. Money means what? Money means points. The much points you have, that means the much money you have. Maddox getting 8, UG Evils getting 6, 14 Lucky Cats getting 5, 141 getting 4 points, Real Services getting 4, Hidden Lips getting 4, Team Para getting 4, Team R4R getting 4 points, right? And that's it. I'd like to hear it for my okay. I'm done. So let's talk about for the second page. It's indeed Team ASLs, the team only not getting any point. Team RAKSHYAS getting 3, Rivals getting 3, 2 points for Team NOTYOUR, HLXCTR, TBM, and 1 point for Team DRS, MVKE, and Team YH. But ASL getting no point. But that was the match rankings only. Now you have to watch it for the match fraggers. That's Ajaya this time. Yes, from Team Train to Kill. It's 7 eliminations. Where Prime Vunja getting 5 eliminations. Rules OG getting 3 eliminations. And Master Jordi has also 3. And Killmonger getting 3 too. Now, the overall fraggers, there goes the shuffle. Cool 7-7 getting total 13 eliminations, and Prime Vunja getting 12. So just 1 point of a gap. Killmonger getting 10, just 3 points of a gap to the tabletopper. And Superman with 9-1-1 on the top 1 and the top 5. Now, the overall ranking, that is the shuffle is here. 40th machine with 56 points in total, but without any chicken dinners. There goes the power that Team 40th machine has gotten here. Team T2K Sports with 40 points, just 16 points of a gap. And yes, that's it. The top 2 competitors we get after the game, after third game. NOTYOUR FIRENATION has 26 points. MG and Viking Sports has 25 points. Skyforce has 20 points. Real Savage has 17. 141 has 16. Pad Official has 15. Mad Bulls Official has 15. And Team Rivals has 15. Now look at the gaps between the teams. That is so close, right? So close. Anytime, anything can happen. On a single game, you can see on a single battle, you can see on a single stage. On the second page, it is indeed Team Halaletia getting the top of the second page with 14 points, but you still have a lot of time left to make the comeback, right? Yes, today there are 2 more matches. Now Rakshas Sport, Hidden Leaf Sport has the 11 and 10 points. Team 14 Lucky Cat has the 9 points. UGV Spirit has the 8 points. Ready for Revenge has 8. Gears Gaming has 3. TBM has 2. Young Asians has 1. And ASLs or ABRUPT Slayers has just 1 point from the segment. Now, there comes the schedules, and the schedule says T2K Sport has made it to the consistency, taking 2 chicken dinners in a row, BDB, and now it's time for them to make the hat-trick. And the next game is on Miramar, and Team T2K has shown us the first Miramar on their side too. I doubt that I might not be able to complete. The final 2 games from now, and that might be a problem for my career
me, but still I'm trying my level best, right? It's not with the commentary. I'm not making any excuses. I'm just talking the truth that I lost my electricity. Now please pray for me so that I can get back my electricity as soon as possible. Otherwise, it will be so tough for me to continue the games. Now, I've taken a lot of time to get inside on the match, and now I need the IDPs. Okay. For the fourth game, it's time for the fourth game, right? Paras, they forgot to give me the IDP, and now I'm inside. What? The internet is gone? It shouldn't be. The electricity is gone, and the internet too. Damn, what day is today? It shouldn't be. Let me connect to that again. Please do not change the network. Shit. Okay. Yeah, we're back again with the stream. It's not loading anymore. 0.0% dropped frames. I'm back on the feed. I can turn off the Wi-Fi for now. No more loadings. The loading is gone permanently. And the quality is in the 1080p. So I guess you'd enjoy that. I'm in the spectate. The match is about to start. I'm just using 60% of the power. Now, no more interruptions, okay? Not anymore. Yes, bro?
Gentlemen, it's time for me to get inside the game again. Yes, you are mostly welcome. Now, I'd like to watch out for the overall stats because it's gonna be the fourth game, right? And you need to see the competition from the overall ranking. It is Team 40 Machine on the top, and then Team Tiriki Sports on the top second, and then Team NOTYOUR on the top third, and Team MVP or MVKE on the top fourth, Team Skyforts on the fifth, and then Team Real Savages, Team 1 for 1, Team Para, Team Maddox, Team Rivals, Team Halali TRs, inside of the top 11 teams. And then on the top 12 teams is Team RAKSHYAS, Team HLX on the 13th, Team 14 Lucky Cat on the 14th, right? The overall leaderboard has been updated. Now you'll look forward for the eliminations, right? And that'll be updated as soon as possible. Now let us watch out for the flight path as I'm delivering the information to you guys that I'm just getting out of the electricity, the charges. Now look at the flight path. If the match gets interrupted in the middle, do not look for me because I'm dead. I'm just getting dead. The first battle from on the Validilmar side, and the second battle on the water treatment side, and the third battle on the San Martin side. Now at first we see Team DRS Gaming fighting with the Team MVKE again. Example Cyclone, Kilarvati and Yeta. Both. All will take the revenge right now. Now example, getting the first knock. Chris is sweet, the first player to be taken away. Then Yeta Uta tries to make the angle. Now Killer White comes with the support, taking down break. Now is the second lead, right? So DRS Gaming this time, it's theirs, it's theirs, it's theirs, it's their home, man. You cannot come in their home and just eliminate them. But Team MVKE did that on the first Miramar. Now the second Miramar, and Team DRS Gaming completed the mission. The revenge is done. Now DRS Gaming has the first 4 elimination points. I'm glad that you were able to watch out for the first battle, and that was from DRS's side, as you wanted to witness their battles. So I just completed it. Oh, look at that example, getting the second knock too, and that is Gojo. But Team Rivals and Team 40 Machines engaged, so we might go for Team Rivals for now. Yes, that's our Team Rivals. And now Rivals is just with Team 40 Machines, and that means Team 40 Machine can be locked on to the point. They have till now 16 points of a lead. So if Team 40 Machines get eliminated, that means Team Tiriki Sport would have the clear chances to get back again, right? So for Team 40 Machines, it should be a good comeback and good encounter. They encountered it, but then Killmonger getting taken down again with Vivek of 5. But Team 40 Machine just taking the elimination, and now it's time for them to rescue, but the time won't be that easy. This time it'll be not that easy. Prime Vanja looking forward for the player. Yes, he watches the player, and then he has the shotgun in hand, and that means he'll obviously go for the securation, and then he would go for the final play 2 on the next compound behind him. Then Team 40 Machine would be able to just rescue the players, but they're on the open area, so there might be some shot, and the shot was being delivered from Psycho, who spotted the players on a corner. Now Team Skyforts comes up and takes 2 players from Team 40 Lucky Cats, but for Team 40 Machine they have got stuck onto. But even from that location, that particular spot, they're just encountering here. Cyclone takes another knock. Team DRS Gaming, yes, this was the 5th elimination to be secured. Now UG Willy Spirits getting lots of grenades, receiving the grenades, and then Team 40 Machines fighting with the teams. Team DRS Gaming, as I told you that I'm using just 60% of the power from the IPS, so my PC might be getting slower for now. It's not using its 100%, but 60% for the longevity of the IPS. Now it's Team 40 Machine again being interrupted to the players, and now being in the knockout situation, and Killmonger getting totally eliminated. A cool 7-7 is the final player left here, using the smokes for the cover, and then he cannot go for the rescue. He will be surrounded
by his surroundings. That's team Not Yours. And now P10 tries to find out the final guy. He found out about it, and Cool 77 is eliminated. That is team Not Yours, getting the 3 eliminations right, and P10 is taking all of the points here. That's good, but still there are team Skyforce close to them, and Skyforce is close to them means they would be engaged. They should be. And now Team Skyforce has the icing godless, and here we go. IC is eliminating the player, securing the knock. Team 1 for 1 is fighting with Team Skyforce's 2. Skyforce loses players from the back end from the different split. YONKO Lucky Cat is interfering with Team 1 for 1, and now it's 9-1-1 getting knocked out. Now IC has got the crosshair control, taking the player alone, taking 2 different players himself, by himself alone, man. That was awesome. Now IC needs the cover. He gets inside of the compound where Godless is on the complete other side to make it in solo. Now the compound should spawn, and Team 1 for 1 is on the run. Yes, they will be just recalibrating the team from this location. But I want to see IC again. I want to see IC. IC, can he do it? He's just only one guy getting the push right now. That's the final player. Not your P10. We're just trying to bait here. Now IC dodged the shot, and IC getting front, and then charging the shot, gets the damages. And now IC, okay, looking for the pre-shots. That's the pre-shot. IC needs the pre-shots. Here we go. IC making another knock. IC, the solo player, just not making 1 knocks but 2 and 3 knocks. BDB. And now it's IC securing the second finish, and waiting for the third to be eliminated automatically. And then the final player from Team Not Yours, and that will be Psycho, who would go for the revenge part. Watch this out for IC, and IC gets the perfect cover here, perfect angle, but not for a long time, but such a short time. Team R4 spotted Psycho. Now there can be the surroundings, there can be the third parties, but still Psycho made it possible to get close to the compound, get close to IC. And now there will be the final 1v1 here between Team Skyforce and Not Yours. So Psycho is looking for the grenade. Now IC getting knocked out by Fantasy. Chari taking down Ninja. HLX fighting with ASLs. Psycho secured the knock. Yes, the knock was made from a different squad, and the knock was secured by Team Not Yours. And the different squads were Team R4R. Yeah, now they'll just know it that there is just one single player inside the compound, so they need to secure that. On the other side, Team HLX, if we talk about that particular squad, Team HLX is losing their players. Yeah, so but still they're trying to encounter with such good powers. It's ASL Captain, the final player here, and now the player needs to recalibrate his position so that he can fight with Team HLX. That Team HLX has 2 different players. One can go with the rescue and one can continue the fight, but no, the 2 decides they'd fight first, and they'd go for the rescue, right? Okay, now ASL Captain takes the grenade in hand. Zoro making the headshots. It's 9-1-1 in trouble. 1 for 1, loses a player again. Captain is just trying to make it in a solo. The grenade goes in the right direction. Liquid is in trouble, but Liquid survives because he was not outside of the warehouse, but he was inside. Yes, and then Frag gets close to Captain and understands this angle is not that beneficial for him, but still he manages to get the 1v1. Here goes the 1v2. He needs the gun switch. He switches the weapon. He knows the player is in such low HP. Yes, he gets the second knock too, but it is not possible for him to get outside again, get on the cover again. It is Team HLX. They had all the manpowers, and now the battle is completed. 4 points for Team HLX for now. And then the battle was happening on the outside of the zone. Psycho getting eliminated. Team Not Yours and no more. But Team R4R and Team Skyforce, the interruptions were happening. And now the next northern location says it's the San Martin. And San Martin has 4 YONKO Lucky Cat, and San Martin had 1 for 1 officials. But yes, still San Martin has the team inside of the city. Now Team 4 YONKO surrounding them. Not exactly from every
angles, but from the southern angles, they were trying to surround them. And then Voltrax comes up with the support. There goes the there goes the lead here. So Punk is in the knockout situation. Punk cannot get the support from the team. He only would be decimated. He just talks for the final time before getting eliminated. But on the kill feed, it is indeed Team DRS Gaming. And this time Team DRS took 8 eliminations till now. It's gotta be the 9th number. So yeah, Team DRS Gaming has started the comeback. It is the 4th game and Team DRS started the comeback on this very 4th game. Now, Team DRS Gaming looking forward for the team TBMs. I see the team TB, Rahat and Maxton and Cheetah is in such trouble, such problems. So for now, it is obviously Killer Whitey who is in the making with the grenade. Now Maxton Noob would be caught up by that grenade and Rahat and Cheetah would fall back. So Killer Whitey is securing the kills. Now DRS has 10 freaking eliminations. I hope you see that from the kill feed. Right, from the live feed. Yes, Team DRS has the 10 eliminations. Now it's for 8, but it will be upgraded to the 10th because the result should be putting manually. Team Halaleti are fighting with Team TDKs. DRS giving with Team TBM. Example is on the front. Spot for player Cheetah. Now Example knows where to charge the grenade. He talks with the teammate Cyclone. Cyclone uses the grenade goes to the side. Cheetah loses some HP. Cyclone has one more grenade. Yes, the battle is not done yet. HLX Ninja secured Ilya. And Example made the knock, but Cyclone still loses the grenade. That was the 11th number of elimination till now from the side of Team DRS Gaming. Where so as you understood, ignore. I had to rest it. The emulator. Ladies and gentlemen, you already understood what was going on. The electricity was gone and I had the issues. And the saddest part is when DRS Gaming was taking the chicken dinner, the electricity was gone. When DRS Gaming was doing good, and that time I got interrupted with the segment or whatever. And now the thing is, I'm just getting kind of depressed. Like why it's happening with me, or why it should have happened with me. Okay. Can I re-enter in the game? Is the match still alive, or the match ended? Okay.
Oh, rejoin match? Still the match is available? Oh my goodness. About okay. It's not bad. It's not bad. I'm back again with him, DRS. Yes, Killer Whitey is securing another kill now. Fantasy is the final player. DRS Killer Whitey is going on aggressive, too aggressive. Final 1v1. And I'm back again. I'm so happy that I can witness him. DRS a chicken. But no! Fantasy is taking the chicken dinner with a shotgun. Team R4 are taking total 15 points from the game. Now you won't be able to witness the overall leaderboard from that part because you know there were the cutoff of the electricity on the other hand too. So now the rankings cannot be counted. And I see in live not showing. Okay. Now I'm back again. I'm available again. So yeah, let's count the results from there this side. Now DRS, how much points they're taking on to? Now it was 23 eliminations with the placement point of 6 means 29 points from this part. Team DRS Gaming has taken 29 points from this game. Nice. Then Team Hidden Leaf Esports, we're taking 15 eliminations with the top 3. That means they're having 20 points from the game. Hidden Leaf also played well. Let me count the points from here from this side because I want to have the result from that live ranking from now because of the electricity cutoff. So yeah, we should understand the game. We should understand the competition. That's the main thing that matters. Now Team TBs taking only 4 placements. Team Real Savages getting a total 10 points because they're taking 7 eliminations with the 3 placements. Then I see Team RAKSHYAS Sport getting 2 points, Team Para getting 3, Team Forinko Lucky Cat getting 3, Team Maris getting 1, Team DDK getting 3, Team 1 for 1 getting 4, Team Hidden, Team Halalitia getting 2, Team Skyforce getting 4, and Team NOTYOUR getting 4, Team ASL's getting 0, Team YA getting 0, Team 4th Machine getting 4, Team Rivals getting 1, Team UG's getting 0, Team MKVE or MVKE, yeah, MVKE, Team MG and Viking ESPORT getting 0 this time. And the MVP title goes for Killer Whitey himself. Now the caster desk should be in front of me because the 4th game was ended and my electricity was back. I wish it was back at 2 minutes earlier when the electricity was cut off and the IPS was dead, because if it was back 2 minutes earlier when the IPS was dead, maybe I wouldn't have any issues and the match would just run without any issues. The stream would run without any issues. But now that I'm back and the game you can witness as smooth as I'm watching or want as I'm I want you to watch it smooth. Now I'd like to take a little bit of break before the final game starts of this day. So till then stay tuned. I know that you know what was going on, so I do not need to explain that again and again, right? So understand the problems with the weather because it's the nature that no one has hands on to, but it's the electricity that we got hands on to, and it's okay. Still, it's okay. We are so good for now. So I'm getting back.
The match has been started. So far, so good. It's so smooth. And right now, the match says the flight path is starting from the Camp Bravo side, heading onto the Sahmi 4. 20 teams again in the lobby. Gentlemen, it feels so sad that the dearest team played well and the life got interrupted. What a luck, what a bad luck with me, with Barastai, and with Gigi's today. Because, you know, the weather and the informations and the tasks are so high up. Now the first stage is supporting the Paradise Resort. The teams are jumping for their directed locations and the battles are happening into the bootcamp. Then final, then Sahmi. So we'll head on for bootcamp at first and we'll see here what's going on. With Team Skyforce, with Team MVKE. Now Team Skyforce needs the lead. And now they want to use the shotguns. Team DRS in trouble again. Cyclone, Killer Whitey, Yatauta, Destroyer available. Okay, but not Cyclone available. Let's see Yatauta, Killer Whitey, an example. 1-for-1 fights with Forinko Lucky Cats. Rakshas fight with MVKE. Superman been taken away. Skyforce takes the lead again. DRS Gaming has the lead. Now Yatauta gets in front. Example gets taken away. It is 6-9. So Halaletia versus Team DRS Gaming. Direct hit on fight. And yeah, Halaletia in trouble. In really big trouble. 6-9 eliminated. Okay, so Yetauta eliminated the final player 6-9 and that's it. Team DRS Gaming winning the first draw clash battle while losing out. Example and Cyclone the first 4 kills for Team DRS Gaming. And then the next fight can happen on 2 with Team TBs. Okay, they were interrupted. But they had the time to rescue the players, right? And then for Painan, it's not that bad. It's Team 40 Kick Cat being interrupted again and again. Savages interrupted too. 1-for-1 taking the lead. Rainy having lead. Oh, stab this person. Oh my goodness, Punk never realized that the player could come from the front, not from the down. But yeah, from the upper side, not from the downside, right? Now Zoro tries to sneak in, but no more results. 1-for-1. Having all of the leads possible. There are not only 2 teams but 3 different teams here. It's Team 1-for-1 has all the points, all the leads. And now Forinko Lucky Cat Zoro eliminates the final player of Real Savages. And that's how the match or the battle starts. And the battle also ends. But the match is going on smooth. And a mad interrupting with Team UG Village Spirits. Taking the first elimination. That was Sismug getting eliminated. And then it is indeed Team UVs or UG Evils. Yeah, UG EVs. Not bad. Not bad. We are gonna witness the competition round. Team Mad is doing it good. UGs also encountering with them. Gets the first knock. Now UG's in trouble. Mikey. Such low HP he is in. He knows where to pre-shot. Yeah, but that was paying faster enough. Also, Mikey loses the HP, right? So, he had to be taken away. Now, I'm hoping for the result. The result is back somehow. It's not your P10 interrupting with Mad Ninja. Okay, will I get the overall leaderboard? I want that overall stats. So if I switch it from the maths ranking to the overall stats, is it activated? Yeah, it is. It is activated, but not like that. Team Skyforce cannot be on top, so I should prefer the live maths rankings. Yeah. Okay. So yeah, Maddox has the 2 eliminations till now. Maddox is looking good. Hidden Leaf Esports has the lead. First stage in the chaos is all happening between Dreams and Painan, yeah. And the rest of the locations are just as cool as you expect it to be. Now DRS Gaming getting close to Painan location, and that means Team
DRS Gaming might have a plan to fight with him 1-for-1 this time. 1-for-1 inside the pylon. And DRS Gaming moves forward. Yet out a killer Whitey just proved on the previous game what they can do, what they are still capable of. This is the roster of the real soldiers gaming. And yes, actually they are the real soldiers. And the soldier says, soldier, oh soldier, on the left you see a player. And Yetauta watched out for Voltrax but didn't shut it down. It could have. He didn't live. Started the fight with Para and he didn't live, just, eliminates the players. Rohit gets back again on the kill feed. Takes down Liquid. Team Para. Guess what? Team Para has gotten the lead, what they wanted for. Absolute and Manish. And then it's Rohit. This player's on a different angle, on a different flank. It's a solo single flanks, you might say. So now he didn't live. Goes in with grenades. That was a time bomb. And Absolute tried to, just get himself in a safe spot. But that safe spot was also dangerous. Because it was the plan, right? And now Ninja tries to use the vehicle, but Team DRS Gaming has started the fight with him 1-for-1. Now is the first knock comes here. They're expecting for the second knock to its Jibian. Will try to come close, but Yatauta knows how to stop Jibian to get close to Voltrax. He just stays in smoke again. And what? Nish. Uh-oh. The kill feed, it was Jivian charging the grenade. Yetauta getting eliminated. Now Killer Whitey gets all the responsibility. Now this shouldn't be in a low quality because this stream is going so smooth with the bit rate. So you can change the quality from the YouTube stream, right? Because I changed the quality from the YouTube stream. So yeah, please make sure that you're watching 1080p at 60 fps by the settings from YouTube. By that you can get the full stream quality on a device. Now it's Team Para will get eliminated by Team HLX. HLX did so good this time and they started the Sano game. 6 eliminations were so far so good for the team to make something on the leaderboard, because you only get 2 days for the tournament to be eliminated, to be completed. That was Team Para official Warfare Clash, and they are good. But why I turned on the match eliminations? Okay, that should be off. Now Team HLX has the 6 eliminations here. So HLX would surely go for the Painan or Bootcamp Hill. I hope so. Bootcamp Hill would be beneficial for them, or even they could have taken the Camp Health Island and make it into from the Hathin Bridge. You see that? Okay, but they're not taking those. So Forith Machine, on the other hand, as the table topper, started the game what was needed to, and now they are on the best possible stages. Give me a second. We are watching after Team Forith Machine. Not bad. Forith Machine watches for the players, but I need to, maintain the live. Give me a second. I get the live. Get the live link. I get the browser link too.
Okay. I get it. And the stream settings should be this one. This one. And the target is done, right? Right. 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 Okay. The kill feed is hot, and I'm hot too. I need the fan. Sport indicates the first 4 eliminations. I'm back again because my task is done, is completed. Now I get 3 different streams on 3 different platforms, and I'm just running 3 different lives right now. Okay, so let's talk about team rivals on this location. It is indeed team rivals in within the top 10 teams for now. This is the first day, gentlemen. And now look at the vehicle that is actually on fire. I wasn't able to see the vehicle, but okay, now I see that. The vehicle hits on fire. It's blue and red, both. Nice. I love that. I love that. From team rivals, it was good. It is such a good visual. But I'd like to watch it for the mechanics for now, as 9 eliminations were there, and now the team is heading for the team NOTYOUR to fight with. NOTYOUR shoots a close. Psycho gets the first lead. Slab and taken away. Now Psycho takes the weapon in hand and goes for the next possible pre-fire. He tries to switch the weapon, but it is too late. Frag gets there. And first now, it is P10 to be taken away by Ninja, and Amulya, who is in solo, isn't too far away from the team HLX to actually get engaged with, but obviously he'd come up with some good options and he'll take a revenge in 1-1 Voltrax. The player tried to interrupt with first knock. Now he tries for the second one too. Sees the player, tries to get in the cover. Now the sneak peek is going on. That sneak was good, but not that much to spray on with. The location is so bad, so he needs to switch the position to the back so that he can recalibrate. And now it is indeed Team Forward Machine with on Paradise Resort. Okay, so yeah, that is good. Now Forward Machine is just on Paradise Resort, there has a neighbor team, and that team is Rivals. So Rivals versus 4DM, a fight will happen. Now ASL's taking any point, but not this ASL. That was another one. It was Amulya GG, where Forward Machine takes the first knock. Also Forward Machine loses the first player. Team Rivals versus 4DM, the battle is started, and now Team Rivals watching out for Forward Machine Pika. Okay, that was Pika, but not Pika, but Pika. Yeah, Peak 4. Still the 10 teams, third stage. The zone is completely supporting the Paradise, and the teams are holding for some seconds, right? The Forward Machine needs the lead again. ASL's interrupting with the battles. ASL's are here on the Paradise. I was for Team Y, yeah. How was I? How am I? Yeah, but the Forward Machine, look at that. Cool has been taken away by Captain. That was a clean third party. Now ASL's securing the kills. Amulya taking Ninja. The revenge was going on. Premika. Not Premik. Taking a knock on the kill feed. The Forward Machine
using the grenades. Here goes the grenade. That will not deal any damages with the team rivals. Now Prime Vanja is still loot. And Premika. She is good. प्रेमिका ओके प्रेमिक होता तो ये लड़का होता, प्रेमिका है तो लड़की ही है, कोई बात नहीं। तो चलो फिर देखते हैं प्रेमिका कैसे खेलते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, लेकिन टीम राइवल्स की तरफ तो देखो यहाँ पर यमी और ताशी 30 ये दोनों के दोनों भी यहाँ पर जिंदा है। लेकिन बात करा जाए टीम एसीएल की तो एसीएल भी यहाँ पर ट्राई दिखाई देंगे आपको, लेकिन एसीएल कुछ कर नहीं पाएंगे अभी तक। कुछ करने का तो मौका इनको नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी के पास जो आना है उनको। But I hope Team 40th Machine would win this. Still, Team Rivals cannot go for the ground floor. There's the new zone, and the zone is only getting the support for Godless 7-9. It's Skyforce themselves, but for Team T2K, there is a new task to eliminate a team in front of them. And the task is Team T2K Sport are just fighting with Team TBM for now. Okay, Mehdi is in trouble. Ajaya takes the first knock here. And where is Ajaya? You see him? There, the angle. Now Rivals getting some grenades from Team ASLs. It's the third party. Tidikaja seeking the knocks. The triple threat by a fight in a 3v2v2. Rivals getting the opportunity to rescue. But for Team 40th Machine, Team ASL cannot make it inside. Now Premika and Prime both getting such good positions by Tidika. On the kill feed makes the lead. On the other hand, Team ASL cannot. I couldn't till now. Oh my goodness, what aggression was that? Yami 18 was getting so front. Captain just coming forward. Now it's Tashi. Now Tashi would come out and try to make a knock, but Chari handled the situation. Handled it good, but 40th Machine knows what's happening on the upper side. Now comes with grenade. The grenade goes. It doesn't come up with any knocks or any benefits. Now Prime Vanja tries to switch the angles. He's in trouble, he's in trouble, he's in trouble, he's in trouble, he's in trouble. Yes, he's in trouble, but the grenade deals with it. And Chari, the jump shot was good, but Premika, the grenade was so good. And now Premika needs to spam. Needs just spamming. Jump shot is so good. Famous shots. Reloaded, but Gangster understood that she was in reload. So Gangster came forward and shot the weapon. ASL gets 5 eliminations. Now ASL dealt with it. It's for Team T2K. Maybe this is gonna be the third chicken dinner by Team T2K. Maybe, just maybe. Just maybe. It is Ajaya indeed in front of Fate. Oh, that jump shot was personal. Goju and Goku Bot both were available, but Goku Bot has the time, but doesn't. Okay, that doesn't count. That doesn't count. T2K changed the angle. Found out about the player. Yes, they knows where the player is, but that's a glitch. I hope. Yeah, that was a glitch. That was a glitch. Now Leah tries to get close. Okay. Another player. Oh, Ruzoji made the knock. But Goku Bot handled it. And Delia is taken away. But, in the meanwhile, Ajaya takes all of the angles and decimates them all. Now, Team ESPORTS dealt with 3 different teams. Has taken 12 eliminations till now. It's only the top 3 teams. 1-4-1 available. Skyforce available. Taking rules Oji getting caught by the zone, but Team Skyforce has just won. Team 1-4-1 has just won, and T2K had 3, but they have to become 1. What a situation is this? What a final game, gentlemen. You were watching Warfare Clash Season 2. Extremely sorry for the technical difficulties. It was by the electricity. I was not having any hand onto it. I know that very well, right? Yeah, and there was not much option left, but still we tried our level best. And right now you see the final 1v1 between Team Skyforce, Team T2K, and Team 1-4-1 official. Godless has the compound. Voltrux doesn't has it. Ajaya is in the middle. He's in trouble right now, but Voltrux cannot get close. Yeah, he tries to.
But godless. Will he spot or not? But Voltrax got compromised. Now Voltrax somehow been able to take the place, but Ajaya knows where to come in. And Ajaya takes the chance, but Voltrax eliminates that. ESPORT getting eliminated on the top three, on the top third. But Voltrax is the final guy. And he needs to heal up. Voltrax couldn't heal up. Okay, he wants a first aid kit. Maybe he'll get it. But no, godless. Switching the position. That's the buggy, and he gets the angle. Spot the player. But Voltrax survived with just that much HP. And a godless knows that he needs to spam it. The vehicle should be blasted before Voltrax goes up. But the vehicle is blasted, and Voltrax got a moment into. Yeah, Voltrax got the moment here. Now Voltrax can clearly complete it. And now Voltrax, got exposed, and godless getting the chicken dinner. Now there goes the match. There goes the ending. Let us celebrate the chicken dinner at first, and then we'll head on for the moment. I love to watch out for the chicken dinner moment. I hope the result is back again. Yes, so congratulations for Team Skyforce for winning the final chicken. Here we are. Total 43 points in 5 games. Skyforce did it. They made it to the consistency. And now they have come back with the final chicken dinner. Congratulations to the Team Skyforce. The BG has changed. I got 2 BGs again. This is the main BGs for me. Okay, I restarted the PC. I forgot that. Skyforce winning the chicken dinner. I celebrated the chicken. Now the match rankings. From the match, Team Skyforce winning 19 points. Team TDK winning 17 points. HLX winning 15 points. And Team 141 winning 13 points. Nice. The top 4 teams has the double digits. ASLs has 7. DRS has 6. NOTYOUR has 5. YA has 5. 4DM has 4. Mad Machine has 3. 4 Yonko Lucky Cats has 2 points. I wasn't able to witness the comments after the restart. Sorry for that. Then Team RAKSHYAS getting 2 points. Halatia getting 2. RSS getting 2. Rivals getting 2. MVKE getting 1. Para, UG, R4R, and TBM couldn't getting any point from this match. Now the match fraggers list, that says we have Godless this time with us with 7 elims, and also Frag with 7 elims too, but Godless survived more. Ajaya gets 6 elims, Master Zodi getting 5, from TD gets 2 players, Team Voltrax getting 1 players here. Okay, that was from 141. Voltrax played it good, tried it good. Now the overall fraggers, that has a good shuffle. It's Frag from Team HLX being so consistent. And then, there is Vanja from Prime with 15 eliminations, Cool with 15 eliminations, Ajaya with 14, and Killer White with 14. Lots of talented players I can see. Now, Killer Whitey is in the top 5 list. Yeah, he'll surely go on top. I believe in this guy. Now, let's talk about the overall rankings, right? Yeah, let's see. 4th Machine is on the top with 64 points. And after 5 games, Team ESPORT are close with 4th Machine with only just 4 points for the competition. 60 points in the second spot, 4 points for the competition. Hidden Leaf Sport getting 45 points on top 3, and Skyforce getting 43 points on top 4th. DRS Gaming getting 37 on top 5th, and NOTYOUR FIRENATION getting 35. They're so close with the competition, right? Anybody can become the table topper on the next day. Then Team 141 official getting the 33 points. Real Savage getting 29. Team MG and Viking Sport getting 26, and Team Ready for Revenge getting 23. And that's it. The first page ends here. And the second page says Mad Bulls official, Para official, Team Rivals with 18 and 19 points, and Team Halal ATR with 18 points on the second page. Only just 1 day left to complete the event. 5 more matches, and that'll be happening tomorrow without any interruptions. I'd like to invite you all again on that day. Now, RAKSHYAS Sport, 4 Yonko Lucky Cottage, Evil Spirit, and ABRUPT Slayers, Young Asians, TBM Sports. They are with some good points, and I clearly hope that they'd come back on the second day and the final day. So that's all, Lord. Let's watch it for the schedules. The schedule says on the first game it was Team MGN Viking Sport. On the second, 2 games, Miramar and Nirangal. It was Team TDK Sports, so consistent, taking 2 chicken dinners, and the highest chicken dinners today. Trained to kill. I wish you best of luck in the future. Then I see the Team
ready for revenge. Team R4R securing the fourth game, and the final chicken dinner goes for Team Sky Force. That's all, my lord. This stream is ending here, and I'd like to show you the overall leaderboard when this stream will be ended, right? I was the host Quickie Arc with you guys today on this event, and the event is Warfare Clash Season 2, right? So yeah, so Warfare Clash Season 2 day 1 ends here. So let's meet tomorrow. Till then, stay tuned. I hope tomorrow you'll enjoy more and more, because I'll be ready to make you enjoy the game, because the caster did that much, right? So pardon me for these technical difficulties that happened today. Pardon the organization. Become a part, become our family member by subscribing our channel. That's it for today. Stay good, stay well, stay blessed. Allah Hafiz to you all. Bye. Ta-da, ta-da. Watch out the result when this stream is gonna be ended.